तो पंचर ही कर देगा किसी को। पापा खुला पड़े सला के। टायर ही फाड़ के रख क्या है यार, तो क्या स्कार्फ नहीं लेके आया। लिव करायला होता नाही थांबणं रेसिपी पण आली आहे आपण नाही दिसत ना हेलो दीजिए 3.5 मैं शंकर जैसा दिख रहा ना। मैं शंकर ही निकले। आया ना नीचे की गली में जाकर के तू कब आवाज आई तो क्या है क्लियर है अच्छा मेरे को लगा कोई और है। तो ही नहीं। ए बेटे मौत कर ली। त्याच्यानंतर आहे 145 नंबर हाँ बेटे मौत कर दी बेटे। अरे बेटे हाँ अपन जाके क्या करेंगे ये तो पीछे इतना उछाले जल्दी
Good morning, friends. It is our pleasure to have Gaurav Sambe as he is professor in our college and in charge of SRC, Student Representative Council. It is very essential to have social activities. You need to involve yourself in social activities and college activities as well. Like we have discussed earlier, हमने क्या बात की थी कि it is our pleasure to have Gaurav Sambe as he is professor in our हेलो बराबर है सही वे में जा रहे हैं हाँ। हमने बात की थी कि कॉलेज में जो है जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत इसेंशियल है एज वी आर फ्रेशर्स वी डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर टूवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये एक्सपोजर जो है हम लोगों को देने का काम जो है ये एक्टिविटीज करती हुई नजर आती है। तो ये एक्टिविटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे करिकुलम के लिए, या यूं कहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर द बैकबोन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप लोग एक वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी नहीं रखते हो तो डिग्री में आपको चाहे जितने भी मार्क्स हो, आप रियल वर्ल्ड में ज्यादा क्या कहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते हो, या एक क्या कहेंगे ग्लास ग्लास सीलिंग सी आ जाती है जिससे आगे आप मूव नहीं कर पाते हो। विदाउट फर्दर अड्यू आई रिक्वेस्ट संभे सर टू टेक द चार्ज।
Hello, am I audible, guys? Hello. Very good morning, guys. I am audible. Can anyone respond to this? Okay. So first of all, I am Gaurav Sambe, Assistant Professor in Department of Electronics and Telecommunication Engineering. I am currently holding the charge of SRC in charge of the institute. SRC in charge, and first of all, from on behalf of JIT and from the whole Student Representative Council, I welcome you to this induction orientation seminar to the first year, and I also welcome you to the institute. Today, as you are going through an orientation seminar for first year, we will be discussing about the role of SRC, that is JIT Student Representative Council. Now you have, from 2 or 3 days, you have been given different information regarding your syllabus, curriculum, maybe of contents, what you will be studying all throughout the first year, second year, third year, other than the programs, like what actually happens in engineering institute. See, being an when you enter an engineering institute, it is just not that you will be studying subjects regarding engineering, but you will also be groomed to become an ethical and moral professional. A professional in a sense where you not only get the information of your allied subject, but also you get information regarding how your social responsibility should be, your role as engineer to society, your contribution to society. On this role, the main focus is done by the JIT Student Representative Council. Now, what is Student Representative Council? It is as similar as having a democratic institution where student can have their own council, like we have the parliament in our country, where we elect some to represent us and to govern a whole country, to make the issues which are there, to solve and provide us a solution. Similarly, when we enter an education institute, students are the only backbone and the prime feature of an in making student groom to a next level, or making them the perfect professional product is the aim of our institute. So the representative council make different commitments or different activities to groom yourself to make you a thorough professional. I will just brief you about the what SRC is. Can anyone tell me, have you been the class monitor or represented any forum in your college? You can just drop a chat message in a chat box. Okay, now what you are okay, fine, Shakib. That's very nice, and we are looking forward that you will be taking same roles in our institute also. Now what you are seeing is
a stripe of JIT, which is Jhulelal Institute of Technology, having two different logos where it is written NAC accredited and ISO certified. Below that, you are seeing the SRC's logo. See, SRC is an utmost an institute in itself where it represents all the students' body. Now, the as you will see, the SRC's logo stand. There is an S and having a sword in it, and the handle of the sword is represented by the nib of a pen. So that itself gives you the very view that what SRC stand for. It stands for all the students, their commitment and their value enrichment in their engineering. Okay. लाइट चेंज नहीं होता है, एक मिनट. Okay, now just to give an overview, what is a student representative council? It is a committee of all the students from second year, third year, fourth year of the institute. Plus, we also have a representative from MTech and MBA students. Now, it is a council of students where a body is elected or been appointed by the SRC in charge after thorough process of interview, after their selection, after having it, there is an induction program. Then we have a council, which is known as SRC. Now, this SRC comprises of all the students from all the branches, be it CSC, electrical, mechanical, everyone is represented with the due course, their representation of their department, if according to the of the. Now, what all activities are student activities in the institute, be it a celebration of Independence Day, Republic Day. We have a cultural festival called as Jallosh. We have a technical national technical fest, which is called as Shikhar. We have different forums for the different branches. CSC department has its forum like Encyphris. Electronics have Zeal. Electrical department have Electra. Mechanical department have its metrics. All the students' bodies are formed so that all the student activities are done by the students. From the organization of event to the participation, promotion is each and everything is done by the student. Even the cultural festival, which you all may be calling as gathering in your colleges, that gathering we call it as Jallosh for JIT. Now that Jallosh is totally handled by Student Representative Council. Now, it is from the points you are visible on your screen. It is a heart of students' involvement. Not only SRC is just not a body where only you are being given the task to organize event in the college, but also to upgrade the system in the institute. Now, SRC is also contributing in feedbacks. It is also contributing in quality initiative where social responsibility is also being taken into consideration by SRC. They are visiting villages. They are visiting many areas in Nagpur. Now we are having a student awareness campaign for the traffic management, where SRC is involved in awareing persons on traffic signal to follow the traffic rules. Now, SRC has also contributed during the COVID, where
the SRC has associated with an NGO called NECI, which is also been founded by one of our students from ETC department. They have, throughout the lockdown, they have provided rationing, different, after lockdown, they have provided the people, the students residing on the footpath with pencils, stationery, school stationery, and also have been taking classes around for the people who are not that much capable of having the certain process. So this is the different feature where not only technical part is considered by SRC, but also the social responsibility is also being taken into consideration by SRC. We mutually have different, other than the presentation, I would also like to share with you the real-time photographs of the council and who all are the members of today's council. I would also would like to make someone available so that you can have conversation with them also, or they would be having conversation with you. Okay, my sound is not getting, you're not getting my sound. Okay, now what you are seeing on your screen is the message from the then SRC in charge, where the new committee has been formed. I will just be, we have a committee of 45 students of different branches. We have different posts, like president you are having. You can now see what actually the students are. SRC is now handled and lead is Devesh Atkar. He is a final year student of Department of Electrical Engineering. Mr. Devesh Atkar, he is the president of SRC. The role, his role is to manage all the events and to lead the event, each and every event. We also have vice president. He is also from Department of Electrical Engineering, final year student, Mr. Anshul Barahate. Similarly, we have Shivani Shukla. She is the General Secretary of JIT SRC 2021. Her main role is to make the arrangement for the meetings, to make the agenda, to see what future events are, and to plan according to that event. This is Mr. Vaibhav Kungwani. He is a treasurer. The role of the treasurer is to see all the financial management of any event particularly. So by this, you can make an overview, like SRC itself is an institution where there is a person from president, we have financial assistant like treasurer, we have co-treasurer, each and every thing or requirement which is required for hosting an event is totally done by the students. It is for the student, by the student, and to the students, right? There is a long list of 45 members. Megha Kode, she is additional general secretary. She is also from Department of Electronics and Telecommunication. This is Rahul Jain. He is event secretary. He already has been placed with TCS now. This is Mr. Karthik Runde. He is discipline secretary. So each and every post is given to different students. These students themselves are there to handle different portfolios which are there with them. We have a different roles. And more important, like every institute or every body has its own flag or like something. So JIT SRC also has its own flag.
This is the flag of JIT SRC. Is it visible to you guys? You can drop your message in chat box. And the motto of JIT SRC is Shaurya Tejo Dhritir Daksham. The motto has been taken from the Bhagavad Gita. It means the valor and the perfection makes everything good. This is the flag. Now we will be moving to the Instagram page of SRC JIT. Now this is a some of you may message me in chat box if you have any queries regarding it. This is the page for SRC JIT Instagram page. Now each and every update is provided to the student of the institute through this page only, where we celebrate birthdays of our members, also of faculties, and also of some students. We also have different events. Now currently we had a competition of designing a college magazine. College का magazine design करना था, तो we had kept a competition for that through SRC. One of the student of CAC second year has bagged the first prize. Student has designed the magazine, right? यहाँ पर हमने कॉलेज का हमारा मैगजीन था जो यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में हमको भेजना था. तो व्हाट वी हैव डन, हमने बाहर से किसी डिजाइनर को नहीं बोला. वी हैव आस्क्ड आवर स्टूडेंट, हमने हमारे स्टूडेंट्स को बोला कि हमें हमारा एक मैगजीन बनाना है, तो आप उसका कवर पेज डिजाइन करके दीजिए. सो इस मैगजीन के कंपटीशन में हमारे पास कम से कम बहुत सारी ऑलमोस्ट 25 एंट्रीज आई, जिसमें डिफरेंट प्रोस्पेक्टस या फिर डिजाइन थे, जिसमें से एक डिजाइन और एक नाम सफरनामा, JIT सफरनामा was shortlisted, and the student Ashwini Rangari got the first prize, and her design has been approved by the institute for the college magazine. So this provides, SRC provide platforms to every student to showcase their talent. It is just not कि आपको सिर्फ पढ़ना है या फिर पढ़ते हुए टॉप करना है, but also with that you have to make sure that you also update yourself regarding in sports, in curricular, in social activities in which you are okay. The page, you may follow this page by logging into your Instagram profile. Our Instagram handle is src_JIT Nagpur, and each and every means after entering in this campus, each and everything will be provided to you through this platform. Now after you now this all everything is been done online due to this COVID pandemic, but we are hopeful that soon colleges will reopen being in campus. The moment you enter in this campus, we will be having an interactive session with SRC's team, and I hope that maybe anyone from SRC would be connecting with you. Bhushan Chandurkar is asking, sir, how to join SRC team. Bhushan, when the session start, means when the session naturally starts in June of every year. So we schedule an interview. You can see this. There are interview in June. After the interview, the process, we call for applications. The application are shortlisted. There are different criterias.
उन क्राइटेरियाज पर हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद फिर एक टीम बनाई जाती है, एक नोटिस फ्लोट होता है कि एसआरसी का टीम बनने वाला है, आपसे एप्लीकेशन मांगी जाती है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उस फॉर्म फिलअप होने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू होने के बाद फिर हम एक टीम बनाते हैं जो ऑलमोस्ट 40-45 मेंबर्स की होती है, और फिर आपको उस टीम में लिया जाता है। तो इट इज ऑन यू, आप लोग कैसे परफॉर्म करते हो, आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम ये टीम बनाते हैं। और कॉलेज की सबसे बड़ी टीम है, और सबसे मीन्स यहाँ पर जे एसआरसी में आने के लिए सब लोग चाहते हैं कि हम सब एसआरसी ज्वाइन करें। बहुत सारे क्लब्स है, म्यूजिक क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, फन इवेंट्स भी होते हैं, इट इज जस्ट नॉट टेक्निकल। मीम्स का इवेंट हुआ था, काफी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट, वी मेक श्योर दैट स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन ऑल द इवेंट्स, they don't only get the information regarding just of their technique academics or something, but it is the responsibility of an institute to make you self reliable. SRC comprises of all the students. यहाँ पर कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता है। एसआरसी में कैसा होता है कि सभी के सभी सारे डिपार्टमेंट के बच्चे एक साथ आकर काम करते हैं। एक टीम है जो ऑल डिपार्टमेंट्स को मिलाकर बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएससी, ईटीसी, एमबीए, एमटेक, इन सब डिपार्टमेंट के बच्चों को एक साथ लेकर एक टीम बनी है जो सारे काम करती है, कॉलेज के सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, फिर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कॉलेज का कल्चरल फेस्ट हो, टेक्निकल फेस्ट हो, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, टीचर्स डे हो, फर्स्ट ईयर के लिए कोई इवेंट होता है, सेकेंड ईयर के लिए कोई इवेंट होता है, कोई वर्कशॉप होता है, स्पोर्ट्स चलते हैं, कल्चरल फेस्टिवल में क्रिकेट होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का काम, प्रमोशन का काम, सब कुछ एसआरसी करती है। जैसे आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये हमने गांधी जयंती सेलिब्रेट की थी लास्ट ईयर। इस साल तो वी हैड ऑलमोस्ट सेलिब्रेटेड एवरीथिंग ऑनलाइन, सो वी हैव नॉट पोस्टेड द स्नैपशॉट, बट व्हाट वी हैव विद अस इज, सी, ये गांधी जयंती के फोटोज है जो इंस्टीट्यूट में लास्ट ईयर हुए हैं। If you start following our page, you will be updated with different activities, whatever is happening in JIT now. Now we have one event like treasure hunt is going on. I will show you the flyer for it. You can ask me if you can, if you are able to unmute yourself one by one, you can ask, we can have an interactive session also. Actually, when you will be entering in the institute now, so you will be get more information regarding what all events are, intercollegiate, interdepartment, university level. Each and students participate in each and every event. Like we do have a event called Yuvarang. Yuvarang is a university level event which is a cultural and sports festival. Students from JIT also participate with them in them. All the sports, we have facility for basketball, badminton, cricket. We have one of the means from in the engineering institute, we have a very big cricket ground also. Indoor games like chess, we do have a gym for our students. Each and every facility is being provided
to upgrade a student. Okay. Yes, we do have NSS. We our students are in NCC also. We are also planning to have a host NCC unit. We have applied for it. Let's see if we are been given permission to have the NCC unit in our college. Now, can you hear me? Okay, very nice. Umesh, you are an NCC cadet. See, okay, right, good, very good, very good. I will suggest कि आप लोग जैसे ही कॉलेज जाओ ना तो SRC से मिलो ताकि ऐड कर लो. Hello Simran, can you hear me? तिला unmute करून दे. Hello Simran. Yes, sir. Simran, we are having an orientation program for first year students. We are providing them information regarding SRC. Can you inform them more about SRC? If you like to share what all activities SRC do or what SRCs, if you can share, you can unmute yourself and can speak. Oh, नहीं सिमरन को ला. हाँ, I can't unmute. म्हणजे सगळ्यांना तिला unmute करून दे. Sir, I can't unmute.
Okay, we will be unmute. You are unmute. Okay. Hello everyone. I am Simran Kaur from SRC, committee member from SRC. So SRC basically it's Student Representative Council from the students, by the students, and for the students. In SRC, we have members from all the branches. You can join SRC from second year till up to fourth year. And here we organize different events for the students. Like you can see some of the events we had organized, like dance workshop and Khushiyon Ki Fuljadiya, where we visited orphanage, and National Unity Day we celebrated in college. And then we had this Nirman called Nirman, and a competition where students designed the magazine cover. So it was amazing. So you can also join. You'll really enjoy joining SRC. Like in this, we have to organize events for the college students. This time it was online, so we had to organize online, but normally in college we organize for students. Thank you. Thank you, Simran. Thank you so much. See, guys, these are the activities now you are having online, but actually जब आप कॉलेज लेवल पर आते हो तो ऑफलाइन कॉलेज लेवल पे चीजें करने में काफी मजा आता है। एक टीम के साथ आप होते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ मिलकर आप एज अ टीम काम करते हो। और ये जो इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये जीरो से स्टार्ट होता है, फ्रॉम स्क्रैप से आपको स्टार्ट करना होता है और उस स्क्रैप से आपको पूरा उसका पूरा फाइनलाइजेशन तक लाना पड़ता है। छोटा सा छोटा इवेंट हो या बड़ा सा बड़ा इवेंट हो। अभी एसआरसी मिस्ट्री हंट करा रहा है जो कॉलेज में होगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स एसआरसी हमेशा कंटिन्यूएशन में कराते रहता है। म्यूजिक में हो, डांस में हो, टेक्निकल फेस्टिवल के लिए हो। अभी जैसा आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता है, बट अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मार्च में इन लोगों ने एसआरसी ने एक स्टूडेंट्स पार्लियामेंट करके रखा हुआ है कॉलेज में। काफी बड़े लेवल का प्रोग्राम है जहाँ मॉक पार्लियामेंट बनाया जाएगा और उस पर डिबेट और डिस्कशन होगा। तो काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो आपकी एबिलिटीज को, आपके टैलेंट को ग्रूम करने के लिए होते हैं, वो एसआरसी ऑर्गेनाइज कराते रहता है। और जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, ऑफ कैंपस ज्वाइन करोगे, अभी तो ऑनलाइन मोड में आप लोगों का सब कुछ चल रहा है, बट जैसे जैसे आप ऑफ कैंपस आओगे, कैंपस आओगे, तो हम लोग आपका एसआरसी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे। यूजुअली फर्स्ट ईयर से हम लोग स्टूडेंट्स नहीं लेते, क्योंकि बिकॉज यू हैव वेरी टफ स्केड्यूल। आप लोगों का जब तक एडमिशन होता है तब तक कमेटी बन चुकी होती है, और जब कमेटीज काम करना स्टार्ट करती है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है नॉर्मल केसेस में। अभी तो कोविड के कारण काफी सारा डिले हो चुका है, बट हमने नेक्स्ट ईयर से ये सोचा है कि वी वुड बी हैविंग सम 2 or 3 स्टूडेंट फॉर फर्स्ट ईयर ऑल्सो। बट जब फर्स्ट ईयर डायरेक्ट कमेटी में नहीं आता है, बट हम उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं कि किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से कमेटी में आओगे, किस तरह से कमेटी में काम करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट ईयर को हम ग्रूम करते हैं। तो जैसे ही आपका कॉलेज ऑफ कैंपस स्टार्ट होगा, हम फिर मिलेंगे एक बार फिर से एसआरसी के साथ, और फिर जो कुछ भी आपके डाउट्स है वो फिर हम 1-to-1 सॉल्व करेंगे। आई गेस कि आप लोगों का भी कोई और स्केड्यूल है, तो फिर हम फिर से कभी और ज्वाइन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ पेशेंस लिसनिंग, और काफी लोगों ने इंटरैक्ट भी किया। आई एम हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू आर वर्किंग विद हैविंग एनसीसी यू कैडेट्स। हो डेफिनेटली आप जब भी कॉलेज आओ तो मुझसे मिलो। आई एम द एसआरसी ऑफिस इज विद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। आप कभी भी आकर यहाँ पर मिल सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। और अभी मैम विल बी गिविंग यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, Sambay sir, and thank you, Simran, for sharing your thoughts with us. Now we are going to talk about something different and very, very important. That is education and how the career
is going like building attitude during engineering curriculum. ठीक है. I would like to introduce today's guest speaker, Dr. Rashmi Uddanwadikar, Associate Dean, Public Relation Officer, VNIT. Madam has completed BE Mechanical from GEC Raipur and ME from VRCE Nagpur. Ma'am is awarded by PhD in Dental Biomechanics from VNIT. 6 students have been awarded by PhD under her guidance. Her area of research is biomedical engineering, theory of machines, computer graphics, machine design, and so on. She has completed 15 projects till date. Ma'am has published research paper in 31 international journals. She has participated in 49 international and 20 national conferences. She has published 3 books. 13 patents are registered on her name. She has 2 copyrights too. Today, she will be enlightening us about building attitude towards engineering curriculum. Handing over the charge to Rashmi ma'am. Rashmi ma'am, am I audible to you? Yeah, hello. Hello. Yeah, thank you, Ms. Ashwini. Thank you. Please allow me to share my screen. Yeah, ma'am. Ma'am, you are co-host now. You can share. Okay. Yeah, I hope this is visible. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. And I really thank you for allowing me to interact with your students. It's always pleasure to interact with students, especially the first year students. Ma'am, So- pleasure is all ours. Thank you so much. I would like to know how many students are there and the participants. Ma'am, 100 participants are on Zoom and others are on YouTube channel. Like we cannot incorporate all the students. That is why we Okay. have shared the link. Okay. And these are all first year students from all branches? Yeah, ma'am. Okay, thank you. I guess somebody is writing on the screen if you can request them Yeah, not to do yeah. that. Okay, so let me start. Yeah, anybody, Tejas, Pratik, Shruti, some of the names which I can see on my screen. What do you know about the term attitude? All of us are using this term so very commonly. What do you mean by the term attitude? Piyush? Piyush Maiskar is there? Ma'am, they are not audible right now, but they can chat with you on the chat sharing. Okay. Let me see. You see the chat. Sunal Godbole has raised his hand. Okay, so attitude is the way you feel or behave, or the way a person behaves. Okay. How do you normally think? Okay, Mayur is saying attitude is how you think. A friend of yours, he or she has an attitude. What do you exactly mean to say when you refer
to your friend like this, he has a lot of attitude. Ego? Okay. But attitude is not ego basically, but this is how we commonly refer to when we are talking about a friend. How do you feel about someone? Capability of doing something? Yes. Yes. What is extraordinary, Bhagyashri? You want to say extraordinary capability of doing something? The way you treat others. Okay. So interesting to note so many qualities. So let me proceed and we'll continue this interaction. So by definition, attitude by the definition in psychology, it says it's a construct or a mental or an emotional entity which is characterizing a person. Now you all guys are around 17, 18, around this age group. What are your experiences? Accordingly, you have your characteristics, or you are basically formed based on how you have been treated and accordingly how you would treat. So whether you love a dog or a pet or not, that depends upon what was your experience as a child or as a kid. So all you know about a dog is they're continuously barking and then you are helpless because you cannot run very fast and then you are extremely afraid or you are feeling scared. And then you end up with not loving dogs. Whereas a friend of yours, he might be extremely fond of dogs or cats or any kind of pet. So your emotional setup is based on your experience. It is set up based on the social norms. So again, in a group or in a class of students or amongst your cousins or amongst your siblings, how you have been treated, how well you were accepted or rejected. I would rephrase my words. How did you think you were accepted or rejected? Normally, parents would not be partial with their kids. Still, some of us, we feel that, yeah, father is loving my elder sister more than he loves me, likewise. Similarly, the conditioning. You all would agree with the fact that movies, usually the Bollywood movies, have a lot of impact on our minds. All of us would like to copy what the Bollywood celebrities they are doing. Okay, so Khushbu is saying I'm alone. What can I say? So it's not only about your siblings, but in a class, when you are in school students, you are in a class of 40 or 50 students, your performance is equally good as that of your friend. And still you feel that teacher is partial and he or she is favoring your friends more than you. And so you feel rejected. Or at times your teacher they have favored you and so you feel more elated, excited and accepted. Right? So it's not only about the siblings, it is anywhere or everywhere in the group. Within your friends, you happen to attend some birthday party where you are 10 friends and you think that you are the best friend of the birthday girl or the birthday boy, but then they are not treating you as if you are the best friend, and there you get an experience or there you get a thinking that you are not really invited or you are not really welcome in that group. And you start building your attitude something like this. So now we are going to see how this engineering curriculum is helping you to build your attitude. Some 5 to 10 minutes back, I heard your SRC team was interacting with you and they were trying to show you the face of the institute. They were trying to share with you how with the physical kind of interaction and the activities that are happening in your college, they are really having a lot of fun. You get to learn a lot from all those activities and that really helps in building attitude, you know.
When you compare yourself 4 years down the line as an engineer with a friend of yours who is, say, a non-engineer, some other graduate, they might be very smart, very intelligent. They might be very happy in their careers. Still, you will find there is an attitudinal shift between an engineering student and a non-engineering student. The way a medical student would think is different from a way a law graduate would think and an engineering graduate would think. So how do we build the attitude, or how we try to change the attitude, is what we are going to discuss here. You have something to say, Meher? Meher? Okay, so we move on. Let's talk something about what do you believe in? What are your beliefs? Some of you, if you really agree, please let me know. You have some very firm beliefs, you know. Some of us are people pleaser. If you have heard this term, people pleasing. So you are always trying to be a very good friend, very good son, very good daughter, very good elder sibling, or a very good student, and you're always trying to help others because you believe that if you are impressing them, if you are trying to please them, then you will really be liked by everyone. You will be very popular. So this is your firm belief. And this builds your values. So your values are you want to help everyone. So based on this belief, your values are help everyone, seek their help, and help them whenever you need or whenever they need you. So that is the value that you are building. And this is building the attitude. So you are a helpful person, you are a very kind person, and your friends, they are also pursuing you as a very kind and helping person. So if suppose from this list, Deep Wankhede, somebody is asking Deep, how is other friends, say Khushbu, and Deep would say, oh, Khushbu is a very helping girl, and she is always ready to help you with whatever you want. She is ready to lend you books or give you some slides or give you any kind of information that you need. And this is how people pursue you. So your attitude is based on certain values, and those values are based on the beliefs. So I'll like to give you a few simple examples, and then we'll actually discuss how using these different type of attitudes, or what you believe, or what are your values, how they help you in your future. Okay, so let me give you a simple example. Suppose you want to go to airport. You have a flight and you want to go to airport. Your taxi is not available immediately at the door, so you have to walk down a few meters and then you have to get into a cab and then you reach airport. And again at the airport, wherever the taxi is parked, from there to your airport, you have to walk quite a distance. And it's raining heavily. It's pouring heavily. What is your first reaction? Yes, anyone? What is your first reaction when it is? I'm sorry to interrupt you. Yeah. Students, stop scribbling on the screen. I request you to not do these things. Please continue. Yeah. Those who are scribbling is showing their attitude, how they want to get attention or they are trying to seek attention. So that is also a kind of attitude that we get to know about them. Sure. Yeah. So my question to you is, if it is raining heavily and you have to reach somewhere, what is the first reaction that you have? Yaar, might be this. Is this your reaction? Why it's raining now? So most of us will react. Yeah, you'll be angry, you'll be upset, you'll be disappointed. Oh God, why it's raining now? Abhi barish honi chahiye thi. Why not after an hour? Why now?
So something like this, or likewise, ये बारिश रुकती क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं होती है बारिश. So we keep reacting to things which are out of our control. Somebody putting so many yellow arrows. It's really good to see so many arrows, but it would be better if you don't do this. Whosoever is doing this. Thank you so much. मेरे ही टाइम पे बारिश होती है. Yes, this is a very common reaction. Why not we react like, let me take a bigger umbrella? Because this is something in your control, right? Do you agree, Bhagyashri? Do you agree? Keeping an attitude saying, let it rain, because that is something which is out of your control, but you can definitely have a good quality umbrella, a large umbrella. So instead of blaming rain or rain god or whatever the timing, why not try to arrange a good quality umbrella so that you are not, you are reaching airport on time and then you are not drenched in rain likewise. So this is attitude. This is attitude. So you would see there are 50% of the people in the class who would say, yaar, abhi barish honi thi. You cannot do anything about this, but yes, definitely you can arrange for a good umbrella. Other set of people. Since I am working in an institute, I am giving you an example of promotion. A similar example which is more apt for you is, you tried hard, you studied a lot in 11th and 12th standard and you got admitted to this particular engineering college. Your friend probably, he must have worked equally hard. You must have shared the notes and you must have really studied, learned things very hard, but your friend, he could not get into an engineering college. So he landed up somewhere doing, say, a commerce graduation or a science graduation, and they are extremely upset. They're extremely upset. And whenever you happen to talk to them, they'll keep taunting you. तुम्हारा तो अच्छा है, तुम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तुम्हारा तो ये अच्छा है तो तुम तो इंजीनियर बन रहे हो. This way, or they like to boast how they are still better than you. So some way that shows that they're extremely jealous of you. But then they'll not think of changing their attitude. If I'm talking about promotion, say there are 5 colleagues, including myself, and we all are appearing for an interview in which one of us is likely to get the promotion. Now, one person is promoted and others are extremely disappointed and jealous, as I said. And if they are not getting promotion for next year and next to next year also, I know some of my colleagues who haven't got promotion for last 12 years. And if the authorities are asking them to do any new activity other than teaching, and they would say, promote us first and then we'll do this. Why can't you think it in this way that you keep doing, you keep serving your institute, you keep trying your best, and the promotion is a side effect. So you will automatically get promoted. So instead of waiting that let me get the promotion and then I'll start working, the better and the right option is, let me serve my institute, let me do my best, promotion will automatically come. People are not against you, but people don't like your attitude. That is the problem. Another example that I'd like to share with you. I registered for my PhD program in 2004, and yeah, Ayush is right. We love to blame the first thing rather than to find a solution, because blaming is very easy, isn't it? All you have to do is just put the blame on somebody else, because we don't want to change ourselves, but we like to blame others. That is the simplest thing. Okay, so coming back, when I registered myself for PhD in year 2004, my supervisor, who happens to be director of VNIT now, he offered me a very unusual topic, and he asked me, rather than the conventional mechanical engineering topic, Rashmi, would you be happy to work on something unconventional like dental biomechanics?
And I was very excited, excited, but bit apprehensive what this would be. What is dental biomechanics? So what exactly I'll have to do? And then I realized I have to study the mechanics part of dentistry. So the first thing was I had to start searching for dentists because I was reading some of the research papers from in the field of dentistry and the terms, all those basic terminologies, I was new to those terms. So I started searching for dentists. So every square, every other colony, you'll find some dental lab or some dentist or some dental clinics. So I happened to visit all those dentists and I kept waiting for my turn. And then I used to tell them that because I'm doing a research on this topic, I need your help. And 90% of the dentists, their reaction was, oh my God, so you are killing my time. Because all they wanted was a patient whom they will treat and then they'll earn something, right? A researcher is just a person who will kill their time, who will do no good, who will not pay a dentist. So by and large, because they are practitioners, so they are more interested in earning rather than giving consultancy for how a research should be done. So there were literally few dentists who said, ma'am, please sit on this chair. Let me do your check first. Let me check how is your dentition. Let me check if you need some root canal treatment. Let me take some x-ray. Likewise. And I had to go through all those steps. And my search continued for almost 6 months. And then there was one dentist who suggested that this is a friend of mine who has done his post-graduation and he has used some engineering tool in dentistry. So he'll be very happy to help you. And then I approached him, and after the end of 6 months, I really got a very good dentist who was interested in doing research. So you know what is PhD? In PhD, you learn to have patience. So P is patience, H is hope. Keep hoping for the best. And D is dedication. So you are continuously dedicated in doing something. Like somebody with full dedication is playing this crisscross on the screen. If you have got a straight line, should we stop doing this, please? Yeah, whosoever is playing this crisscross. Thank you so much. Another short example. I am giving my own experience as example from my own experiences. You know, a couple of months back, I had a very interesting experience again. There were a few group of students from Alumni Association of VNIT, and they called me and they said, ma'am, we want to do your interview. And I said, right, but this is regarding what? And that girl said, because we are from Alumni Association, we are doing interviews of those alumnus from VNIT who have fared really well, who have created an impact. And I was excited to hear this, that I am being interviewed for this particular thing. I said, it's okay. And then they sent me a link and a video interview. And then they said, we'll be 3 of us. We'll be asking you questions. We'll take your 1 hour time and give us a time. And likewise, so 3, 4, 5 steps. And then we set for the interview and they started asking me the questions. First question, second, third, fourth, general question. So how was your childhood like? From where you did your graduation? Who were your teachers? Who were your friends? What was the best thing about an institute? And suddenly, what was the fifth question? The fifth question was, ma'am, how did you feel when you were getting award at the hands of President of India? And I was shocked. I said, which award? President of India? I don't know what you're talking about. And they said, ma'am, you were awarded with Nari Shakti Puraskar at the hands of President of India in March 2020. And this interview is all about this. And I said, no, I am not the person who got this award. And they were surprised. AA is Alumni Association pages. So like I was surprised, those students from Alumni Association of VNIT, they were shocked.
They said, ma'am, we got to know that Rashmi Urdhwareshe from VNIT alumnus, she got an award. And I said, I am Rashmi Uddanwadikar. So, you know, this happens because of the complex and unusual surname. So both of us, Mrs. Rashmi Urdhwareshe, again a VRC alumnus, 1981 batch pass out. She was director of ARAI Pune, and she got that Nari Shakti Puraskar. And with the word of mouth, you know, somebody asked, okay, contact this person, and somebody gave them my number. So instead of Rashmi Urdhwareshe, they got the contact number of Rashmi Uddanwadikar, and they called me by Rashmi ma'am, this initial name, and they started with the interview. Now, how would I know that they wanted to interview Rashmi Urdhwareshe? And how would those students know that they are taking an interview of some other person? So it was a different experience for me, but those students, they were very embarrassed, you know. And I said it's really good to interact, and at times such kind of miscommunication is also good, so no problem at all. And then they said, okay, anyway, we have taken your interview, so we'll try to see that this gets published in some other issue. So this is attitude, you know, not trying to boast or praise myself, but I understand this happens because of, again, same reason, the unusual surname that I have. Okay. Tell me something about what is the difference between perfection, or what do you mean by perfectionism? How many of you think you are a perfectionist? What is perfectionism, Ayush? Perfectionism? Ma'am, can I Yeah. try my hand in this? Yeah, please. I think perfectionism means trying to achieve that kind of place or what we can say status where nobody can find any fault in the particular thing, Okay. whatever you are doing. Yeah, very nice. Very good answer. Anybody else would like to tell me? Flawless? Okay. To do anything with great accuracy? Okay. Now, who would define what is accuracy, or who would define that this is the best? Or who would judge that this is flawless? Yes. You would decide or others would decide? Who decides this? Who decides this? This is my question. Yeah, perfect. Perfectionism, accuracy, flawless. Yes. We decide or others decide? Others decide. Yeah, that is the major problem. Others decide. So you are trying to be a perfectionist in the eyes of the society. Because society says, if you are speaking in English and with an accent of that of a Hollywood movie, then your English is very good, right? So then you are perfect in your speaking or in your accent. The throw in which you speak, that is perfectionism, because now then you are looking from the eyes of others. So perfectionism or a perfectionist is usually stressed, you know. He or she is stressed because he is trying to reach the peak, or is trying to become perfection or a perfectionist in the eyes of others, not for his own satisfaction but in eyes of others. And so this person is extremely stressed. Instead, you define your own benchmark and you strive for excellence. So when you say that if I can complete this job within say 3 hours, then I say that I have strived excellence. So perfectionism and excellence, these two terms, they are almost taken synonymous. But if you happen to search in the psychology books or on the websites, you would get to see the difference between perfectionism and excellence. So a perfectionist is a person who is stressed because he is trying to achieve perfection in the eyes of others. People should say, yes, he is perfect. Whereas the positive thing is strive for excellence. Try to be
good in your own eyes. Try to be satisfied and contented in whatever you are doing. So, attitude is a choice, and whatever choices you make, that will make you. So that choice makes you, and so you have to choose wisely. Whether you choose to be a very helping person or you choose to be rude, that decides how a person you are or what is your attitude. So let us talk something about choices. I'll be showing you a couple of research projects that we have done in our institute. They are very generalized research, although they find their application in medical sciences or in dental sciences, but all we are doing is engineering. So try to understand from engineering perspective how a thought has been given to attempt this problem, to solve this problem. So we are just trying to make choices and help a dentist to make the right choice. So I'm talking something about the thermomechanical analysis of a restored molar tooth using finite element analysis. Don't go into too much complications of what a title of this means. So, there is on this oral cavity, suppose one of the tooth is fractured, it is cracked or it is decayed. And then a dentist would call for a treatment wherein he'll remove the decayed tooth and he'll place a crown. So this is known as a crown or a cap on the tooth. And this particular tooth will be known as a restored tooth because it is restored. So we call it as a restored tooth, or this treatment is restoration. Now, these are the natural teeth, and this particular cap, when this is placed, this is basically cemented. This is a restored tooth. Now, if you are eating something, there is some mechanical load because some force is coming on that particular tooth. At the same time, you are eating something which is very hot. So again, let me ask you, how many of you enjoy eating what? Say very hot and spicy paneer tikka. कितने लोगों को पसंद है? I'm sure it's the wrong question. सभी को पसंद है. Yes. All of you would like to have this, right? Now, suppose it is too hot and too spicy. So what is the next step that you will immediately do? बहुत गरम भी है और बहुत तीखा भी है. So immediately you will like to drink a glass of water, or if some juice is offered, so juice, which is normally cold, okay, water, juice, whatever drink is available. Do you know what is happening inside your oral cavity? Suddenly hot and then cold. So hot and cold, and already it is mechanically loaded because you are trying to take a bite. Paneer tikka to fir bhi soft hai. Now think about something which is slightly hard or which is slightly crunchy, which will cause more load to come on your tooth. So it's a mechanical load plus a thermal loading. A thermal loading is whenever the temperature inside your oral cavity is switching from hot to cold. तो ये गरम आप कितना गरम खाते हो, प्रतीक? Yeah, it could break. Yes, the treatment fails. Sarthak, you are right. The treatment actually fails. So if I am offering you something which is very hot, how hot you can eat? 60 degrees, 70 degrees. या चाय कितनी गरम चाय पीते हो? The moment it is served, do you start sipping the tea, or you like to pour it in the saucer, keep it for 5 minutes, 10 minutes? Okay, coffee, milk, atul, whatever hot beverage that you take. 60 degree, cool it down to 40, 50, 40, okay. None of us have ever checked using a thermometer कि अभी चाय का temperature कितना है, isn't it? Tomato soup. कई बार ऐसा होता है ना, you go to some reception or you go to a restaurant for dinner and the first sip of tomato soup, it's too hot.
and you get a burning sensation on your tongue, और उसके बाद कुछ भी आप खाओ उसका आपको स्वाद ही नहीं आता, because the tip of your tongue has burned. But that is how we taste it. 160 Fahrenheit. Okay. So what point I'm trying to put in here is a thermomechanical loading is when it is loaded mechanically. So there is some mechanical force coming because of the chewing action. Plus there is a variation in the temperature. So what happens to this restored tooth? And if you want this tooth to withstand the temperature and the mechanical loading, what material should be used? So this tooth is normally restored using either a stainless steel cap or a ceramic cap or a porcelain cap, and then there are different types of adhesives. Glass ionomer adhesive aata hai, composite resin adhesives aate hain, zinc phosphate as an adhesive. So there are so many materials available to a dentist. Now what a dentist would choose? How would he decide? So there are two things normally. First is the dentist would decide based on whatever is available in his clinic, or he'll ask the patient. And then the patient's first question is, what is the cost? And then the doctor would say, this is costing 200, this is costing 500, this is costing 700. So based on the price, we'll decide, अरे वो सस्ता वाला लगा दूं. Or somebody would say, जितना महंगा ये सबसे अच्छा है वो लगा दूं. Or whatever is imported is good. That is our attitude, you know. But this is wrong, isn't it? This is wrong. A dentist or a patient with some knowledge, he or she should select a material not based on the availability or the price, but to ensure the success of treatment. The treatment should be successful, for which we carried out this engineering analysis. So we tried with geometry of a tooth, and we worked only with the thermal loading. On a natural tooth, what happens when it is having a cold load and what happens when it is having a hot load. So when you are consuming something which is very cold, say an ice cream, you are eating ice cream, your tooth inside the jaw is at a body temperature of 37 degrees and the outer surface of the crown is having the temperature of, kitna thanda khate ho aap ice cream? 4 degrees, 5 degrees, 8 degrees. So all of us, we have our choices. So within the tooth which is subjected, or the part of the tooth which is subjected or which comes in contact with your ice cream is at 4 degrees on an average. And the part of the tooth which is inside your gums is at 37 degrees. So that is the variation. So this we call as cold load. And hot load is when you are drinking something which is very hot, or when you are eating something which is very hot. Hot gulab jamun you are eating. Temperature is 60 degrees and the part of the tooth which is inside the gum is at 37 degrees. So within the tooth, there is a variation from 37 to 60. This is hot load. So we tried to work, or we tried to find out what are the stresses and the deformation for cold load and hot load for a natural sound tooth. Then a tooth which is restored with stainless steel crown, with ceramic crown, with porcelain crown. And then when you are drinking and you are biting also, so there's a thermal loading and then there's a mechanical loading both. Again, for different materials, for different loads. And then we perform certain analysis. So this is how a model of a tooth would look like. This is the root of the tooth which goes inside the gum, and this is the part of the tooth. This is the posterior molar tooth. Yeah, Chandani, am I not audible clearly? This is the part of the tooth which is subjected to mechanical loading plus the thermal loading. Yeah, others please confirm. Is there a certain issue with the audio? Okay. No, ma'am, you are audible. Okay, thank you. So because of this alternate hot and cold and the mechanical loading, what happens is at this junction of this crown and the root of the tooth, there's a lot of stresses which are produced. And because of this stress, because of alternate compression and expansion, this entire tooth crown comes out. It becomes loose and it comes out.
So I have seen a person in a reception. उसने एक हाथ में crispy veg लेके रखा हुआ था with a toothpick, and another hand he was having some Sprite, some cold drink, and he was eating and he was talking and he was laughing, and suddenly a piece of the tooth crown, the molar crown, that came out. And that was only because of this. There was mechanical loading and thermal loading and hot and cold, and so that is very embarrassing, isn't it? So using this particular research, we gave the results to the dentist that the porcelain crown with composite resin adhesive, this is the best solution, and this can sustain higher amount of mechanical and thermal loading as compared to the other materials. So this is how we gave a choice to the dentist, to the doctor. So attitude, coming back to the same term, determines what you are doing, with what capability you are doing. So how much you are capable of doing whatever you do. So I ask you to deliver a seminar. You can do it, but with what capability? So probably you are giving your seminar in a better way as compared to your friend, but not as good as your third friend. So the attitude is how capable you are of doing whatever you do. So now we are talking about the capability. So likewise, there can be a capability of a device, there can be a capability of a doctor or a surgeon. So we are moving to another research project wherein we are deciding which particular device is capable of doing the things in the right fashion. So this is a project about intraoral space maintenance. Now, I'm sure all of you have been through this situation sometime in your first, second standard, जब आपके दूध के दांत गिर रहे थे और permanent teeth, they were yet to erupt. And then there was a space in between these two adjacent teeth. और बार बार आपकी जीभ यहाँ पर जाती थी. Your tongue was, it's bound to move in wherever the space is there, And then invariably your parents would say, वहाँ पे जीभ नहीं लगाना, वहाँ पे जीभ नहीं लगाना. You remember? I'm sure all of you must have been through this. So what happens here is, this is similar to sitting in a train, wherein on a single berth there are 7 people sitting. So how would you sit? Tightly packed, ek aage ek piche. So you will try to manage within the given space. The moment somebody gets down, you will try to relax. And then even if there are only 3 people sitting on that entire berth where otherwise 7 were sitting, आप और भी फैल के बैठ जाओगे. जितनी जगह है आप जितना हाथ दूर रख सकते हैं उतने आप हाथ दूर रख के बैठ जाओगे. Because then you feel you are more comfortable. आप पहले भी बैठे थे जब यहाँ पे 7 लोग बैठे थे, even then you were sitting with 3 people also you are sitting. Same thing is the tendency or the attitude of our tooth also, So the moment there is a space, this tooth will try to move on this side and the adjacent tooth will try to move on this side. And they'll try to occupy this space also. Now, if this space is not maintained, the next tooth which is yet to erupt, when this starts erupting, there is no space. तो ये दांत कहाँ से निकलेगा? ये कहीं से बाहर से निकलेगा. So this is coming either on this plane or on the inner side. So this is out of alignment. It is not getting sufficient space to fit in that cavity. For this, there are certain devices known as intraoral space maintenance. So if you visit a dentist while the kid is having the transition from the milk dentition to the permanent dentition, they'll give such kind of devices. Now, these are the devices which normally a dentist would use. There is something like a band and a loop device, a transpalatal or a Nance appliance. All these appliances, they are basically trying to maintain the space between the adjacent teeth, and this space is, now this is reservation. हम ट्रेन में जो रिजर्वेशन करते हैं, हम कभी भी आएंगे, हमको हमारा बर्थ, हमारी सीट मिलनी चाहिए. So whenever this permanent tooth erupts, the space is maintained. And
They can comfortably come and sit over there or erupt, and finally this alignment is maintained. So to book your seat or to reserve your seat, these are the devices. Now again the same thing, which device a dentist should select, whether a band and loop or transpalatal or a Nance appliance. So again, the choice depends upon what is available, which is again wrong. So which device will serve with its best capability? At the same time, patient is comfortable. Something is interfering with the movement of your tongue. The patient is not comfortable. Something which is continuously pressing the adjacent tooth, patient is not comfortable. Or something which is resting against the palate. If this is too hard, then this is hurting the palate. This palate part of your palate is, what do you call it in Hindi? The part of your upper jaw where your tongue can touch, that is the palate. So again, we performed a similar kind of analysis. We applied some load and we studied the stress distribution pattern, and you can see the red zones, they are showing the maximum stresses and the blue ones are showing the minimum stresses. And now out of these three, whichever one is having the minimum possible stresses magnitude wise and the deformation wise, that is the best solution. So with this thought in mind, we completed this project. This was one of the final year projects of BTech students, and we gave the final solution to the dentist that this particular device is the best one. So it is allowing certain degree of deformation. The maximum stresses are within the manageable range. So what I am trying to tell you is how with your attitude, you can do wonderful research, you can serve your society. Then something about gratitude and attitude. Take a short break. Ashwini ma'am, can you tell me till what time I can continue? Because I have a lot of slides left and it's already 12:45. Yeah, you can take 15 minutes more, ma'am. 15 minutes more, okay. Yeah. So gratitude is be thankful to God or to universe for whatever has been provided. And instead of giving the blame, give the credit to the God for whatever has been given. Instead of taking the credit to yourself and putting the blames on other, it's good if you can be thankful to others or to God or to the universe for giving you the opportunity. That is a very good attitude. So on a similar lines, all of you must have heard about snoring. So a person who snores, the partner of that person, he or she cannot sleep. But the person who is snoring, he himself will have lot of issues. Long interruption in the breathing, they'll wake up frequently because of their own noise. Snoring also causes a lot of strain on the heart. This might lead to excessively high weights, obesity. So for this, controlling the snoring, we tried to work on certain device which a person can wear. And by wearing this device, when a person sleeps, the snoring is reduced. And let me tell you in short why a person sleeps. This is the normal occlusion. This is known as malocclusion. Your upper jaw is slightly ahead of your lower jaw. But if your face structure is in a way that your upper jaw is sufficiently ahead of your lower jaw, or your lower jaw is retracted back while you sleep, your tongue has a tendency to fall down or on the back side, and which chokes your windpipe. So while you are breathing, because it is closed, it creates some noise. आपने कभी पेड़ों में पानी डाला होगा with a pipe, and if you try to press that pipe using the thumb, you can see there is a different noise which would come out. So that is exactly what happens during snoring. So we worked with various devices to control the snoring. So these are the devices which will pull the lower jaw ahead, and this windpipe space is maintained here. So this is the device design.
And we tested this device on one of the patients who had this malocclusion. Upper jaw sufficiently ahead of the lower jaw. We gave him this device, and then he was looking something like this. And we also captured his X-ray. And now X-rays are something not very, we are not very comfortable in understanding the X-ray, but this is how dentist has confirmed that with the use of this device, the windpipe was broad open and the patient could sleep without snoring. So I have a lot of projects. Please let me know whenever you want me to stop or you want me to continue. So a bad attitude is, Please, yes? please, we need to listen these type of things. We are engineering students. We need to listen these kind of things. Just because some students are not like serious enough to listen you, that doesn't mean the whole crowd is like that. I know, Please I know, continue. I know. So there are only one or two in the entire crowd who would not be attentive, but I know by and large everybody would be enjoying this because this is something different. Yeah. So a bad attitude is like a flat tire. So unless you repair it, you cannot move ahead. Now take an example of a mechanic, suppose, who is working in a garage. Thank you, Chandani, for enjoying this. So a mechanic working in the garage, suddenly he meets an accident and his hand needs to be amputated, unfortunately. And then if he continues to curse God for मेरा हाथ कट गया, मैं काम कैसे करूँ, अब मेरा हाथ कट गया. Instead of blaming God, can we find a solution? If the tire goes flat, you have to change the tire and then you have to go ahead. On a similar lines, we are working, this is a part of a PhD project of one of my students who worked on a prosthetic arm for those who got their hand amputated below elbow. So जिनका यहाँ से हाथ कट गया था, उनके लिए we designed a prosthetic limb. Now, you know, there are prosthetic limbs which are available, which are as simple as this one, like a gripper. So this is just a 3-finger gripper. You press a button and this will close, and you press it again and this will open. And this gripper is closed so very tight कि आप वहाँ पे अपनी उंगली रख दोगे तो it will get crushed. If you give a plastic ball or an egg, it will completely get compressed and crushed. So this is of no use. On the other hand, you have very high-end prosthetic arms available using which a person can do literally anything. Take a brush your teeth, take a comb, and you can comb your hair, you know, for all such activities. Lot of activities or lot of fingers and the tendons and the muscles are involved. Now this, the gripper kind of prosthetic arm, they are easily available, not very costly, might be costing only 1200 to 1500, but this is not serving the purpose. And the other one which is serving everything, which can do anything or everything, but this is costing 60 lakhs. Now, do you think this mechanic can afford to buy a prosthetic arm of 60 lakhs? No. So we were trying to work out with a low cost prosthetic arm, and we started working with the basic of engineering. We perform certain testing on how a ball is gripped, what is a power grip, what is a prehensile tripod grip, the way you hold a pen. And the most important and the most difficult is holding a paper cup which is filled with water or which is empty. You exactly know with your experience and with your age how tightly you have to hold so that it doesn't get crushed. But a prosthetic arm would not have that intelligence. So this needs an artificial intelligence. So we worked out with what are the range of the forces, and we came up with a 3D printed prosthetic arm initially, which is not very costly. So initial cost came out to be 20,000, but with mass production, this cost can go down to 10,000. So this was one of the project that we completed. If you're interested, we can have another session on each of these projects. So let me quickly go through the remaining projects in 5 minutes. I'm so great. Is this a good attitude or a bad attitude? I'm great. What do you think? It's a bad attitude. Yes, it is bad because this is making you proud.
But if you tell yourself that, yes, I am good enough, I am worthy enough, I am good enough, and I can love myself, that is good. Don't try to boast your greatness on others. Don't expect others to say that, yes, you are great. Yeah, what's your question, Chandani? How to build our strength? Keep loving yourself. Keep telling yourself that, yes, I am worthy enough of all good things, and be grateful to universe for whatever you have. Whatever you have. When you look at a blind person, then you realize what is the importance of your eyes. Till that time, you keep blaming. कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है. You don't know how things are going bad or how the things are going south for other people. So another very interesting project, a very quick look on this. If you are cricket lovers, you would know about a straight drive. Straight drive is a very textbook shot which very few cricketers would attempt. So Sunil Gavaskar and Sachin Tendulkar were the players who would normally attempt this shot, wherein the batsman hits the ball straight towards the other wicket, and this would go directly forward because there are no fielders other than the bowler. So this is a wonderful shot, a textbook shot, but very few players attempt because they are not properly coached or trained to play this. So we performed a research project on this, and this was done in collaboration with Loughborough University at UK, who have their complete lab setup. So this is a bowling machine. If the picture is clear, and the batsman was standing here and he was asked to play a straight drive, and using the cameras, we were capturing the points, and then using the EMG machine, which we have in the mechanical department at PNIT, we checked for what should be the angle of the wrist, angle at the elbow, and angle at the shoulder, so that you play a perfect straight drive. And with this experimentation, we got some results, some conclusion. And then we actually worked on few subjects, the female cricket players who are otherwise also playing crickets. And they said they never attempt straight drive because that is difficult. And then we gave them those tips. So you keep your wrist at this angle before hitting the ball, and after hitting, this should be the angle of your elbow and shoulder. And after 5 or 6 trials, they could hit a straight drive. So you have to tell that, yes, I am good and I can do this. This project is slightly complicated. I'll skip this. Okay, let me quickly go through this. We worked on a project on human muscle characterization. What is the strength of your muscle, and after how many minutes your muscle gets tired. And we perform certain testing on goat muscles, certain measurements, some mathematical equations. And finally, to validate our results, whether we are moving in the right direction or not, we actually tested on patients who underwent hip replacement surgery. Yeah, I'll answer you, Atul shortly. So this is a patient who was admitted for knee replacement surgery, and this is a picture which was clicked a day before the surgery. This was the picture clicked 1 day after the surgery, 2 days after the surgery, and we were asking them to lift their leg. We had placed a small sensor here. You can see this is an EMG sensor, and while they were lifting their leg, we could measure what is the force their muscle is producing. So whether or not they are healing or recuperating. And then this is day 4 after surgery. This is 15 days after surgery when the sutures are to be removed, and 45 days after surgery. So we visited patients' home and we clicked certain photographs. So this we tried on a number of patients who were operated by one particular orthopedic surgeon for a period of 4 months, and this validated our results. And this was a successful PhD project. This was funded by DST. The project was presented at IISc Bangalore in a conference at international conference at Korea in the group of doctors. He is the orthopedic surgeon, Dr. Alankar Ramteke, who performed the surgeries. Okay, so Atul wants to know how to increase height.
Atul, let me finish this last project and then I'll answer your question. So attitude is a very small thing which can make a big difference. So to support my point, I'll give you this last project. You know why Sridevi looks so good? Everything is good about her face, the symmetrical face, her eyes, her lips, her nose, and everything. But the most prominent feature on her face is her nose. I'm sorry, was her nose. Unfortunately, she is not with us now. So if nose is so very prominent a feature, why not do the cosmetic surgery and improve your face? So if a person has a saddle nose like this, wherein this part of the nose, the bone here is not properly developed. बचपन में कहते थे ना नाक के ऊपर से ट्रेन चली गई, so this part is almost flat. So this can be corrected using a small nose implant. The nose implant is as small as this, which is inserted below the skin, and immediately you get this nose lift. So with the lift in the nose, the entire face gets a prominence. So this is a part of cosmetic surgery, which is very costly. And the reason is these implants are very costly. And so the cost of surgery is also very high. So one of the ENT surgeon, he approached us and he asked, can we not make this indigenously under Make in India program so we can cut down the cost of the surgery? And I had a very good batch of BTech students then. We actually fabricated, designed, manufactured, tested everything, and we got this kind of nose implant, which is almost at par with the international level. And we performed the surgery on a patient after taking the ethical approval. So this is a nose implant. This is how the patient was looking before surgery. So you can see the shape of her nose. This is during surgery. Because I attended the surgery, I could click those photographs. A small cut was given and the implant was inserted. Immediately after giving the sutures, you can see the shape of her nose, which got its prominence. And this is how the patient was looking 5 minutes after the surgery. So within minutes of the surgery, the shape improves, and she is very happy with this surgery. Again, we got a lot of accolades for this particular research project at various levels. So let me finish my lecture by saying that all of you really kept your patience. So patience is not basically the ability to wait, but it is the ability to keep a good attitude while waiting. So if you are not cursing the speaker, kitne der bol raha hai, kitna bore kar raha hai, then that is a bad attitude. But if you have really kept a good attitude that yes, we are getting to learn something new, some delta addition. All of you, I am sure, are very smart. You know what is attitude all about, what is patience all about. But if I could add a small delta thing in your knowledge, then that is a good attitude. So thank you very much for your patience hearing. And now I'm ready to ask you the question or answer your question. How to increase height is Atul's question. I think it's exactly one. And so Ashwini ma'am, I can answer their questions for another 5-10 minutes. Like it would be my pleasure. Please. Okay, thank you. So Atul, there is a surgery in which the bone is cut. A small distance is created between the two parts of the bone, and then the plates and the screws are placed. So bone has a wonderful property of healing itself. So new bone would grow between the allowable space, but then that space has to be maintained. You cannot increase the height by 6 inches, but yes, you can definitely increase it by 2 inches at a time. And another surgery in another 2 inches likewise. So such kind of surgeries are available, and yes, height can be increased. Himanshu, you can access my research papers through Google Scholar. My research papers are available there. What was that? Chandani, your question is how to build our strength. Which strength you are talking about? Physical strength, mental strength? Chandani? Mental strength. Okay. Mental strength you can build by thinking positive, be optimistic, be grateful, and learn to forgive.
So these two things, gratitude and forgiveness, this can make you mentally strong. Don't keep cribbing. Don't play this blame game on others. And and be grateful for whatever you have. That will make you mentally very strong. And I'll like to hear from you, say, end of your engineering curriculum, whether you have really gained something or you could really increase your mental strength, Chandini. Okay, any more questions? Any more questions? Ma'am, Stamina. Okay, so somebody is asking about improving the physical strength. So as all of you know, exercise is the only way by which you can increase your stamina. Any kind of exercise, whether it is cardio or it is yoga or it is simply walking or running or going to a gym, this will help you to increase your stamina. So we have in the muscle project, we actually worked with those who are doing certain exercise and other group who are healthy but not doing their exercise. And then we ask them to lift a dumbbell for 10 rounds, for 15 rounds. So those who are doing exercise, they could lift a dumbbell for 15 rounds, and those healthy but not doing exercise, they could lift a dumbbell only for 4 cycles or 5 cycles. Okay, so कितना समय के लिए करना चाहिए अतुल? I think I should charge you some consultancy fee now. And I'm rather a wrong person to answer to this question. It would be better if you can consult some orthopedic surgeon or a physiotherapist. But to my understanding, 30 minutes of exercise should be good enough at your age. 30 minutes of exercise. Anything else? If there are any more questions, otherwise, I think all all the from my end. queries. That's all from my end. Over to you, Ashwini ma'am. Yeah, first of all, let me say sorry on behalf of my students. I don't know how they are doing this thing. Yeah, it's And okay. I understand. All students are students, We were also students sometime back. It's okay. Yeah, go ahead. it is our pleasure to have such an eminent personality as a speaker. Her words of wisdom will stay forever with us. Thank you, Dr. Rashmi Uddanwadikar. Yeah, thank you so much, Ashwini. For students, your next lecture will be after 1 hour, that is 2. Okay. Same link should be used.
afternoon, students. I am Shraddha Joshi. Am I audible? Sir, chat box मध्ये बघा. Okay. So in previous lecture, we have discussed about the chain rule. Okay. Let's revise the formula for chain rule. If we have to find the derivative of any function, कोई भी फंक्शन है जिसके ब्रैकेट में और एक फंक्शन, ठीक है, हो या ना हो, एफ ऑफ एक्स, सिंपल एफ ऑफ एक्स का अगर आपको फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज अनदर फंक्शन. ओके, इफ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन क्या किया था हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द फॉर्मूला. कल हमने डिस्कस किया था कंपोजिट फंक्शन, दैट इज dy by dt or dy by dx. If y is a function of t, then we can operate t means dy by dt and dt by dx. ओके, ये आपने 12th में पढ़ा है, इसको हमने कल रिवाइज किया. देन इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद आपको नया फॉर्मूला मिलता है. कैसे होगा? dy by dt. dy by dt means y dash, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ d by dt of y. y means it is a function of t, that is f of t, into dt by dx, into dt by dx. Okay, so it is a function of t, so we can write it as f of t का derivative with respect to t क्या होगा? Obviously f dash of t. Okay, and into this function is dt by dx means किसका डेरिवेटिव रहेगा? जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव रहेगा, means t dash of x. So this is the formula for chain rule. बट इसको हमने, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझने के लिए, इसके लिए एक एकदम सिंपल फॉर्मूला है. व्हाट इज दिस? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अगर इन दोनों का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? मैं सिंपल वे से बताती हूँ. क्या? डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट, हाँ याद है हमने क्या किया था? आउटर ब्रैकेट का पहले डेरिवेटिव, पहले इस फंक्शन को देखना नहीं फंक्शन कौन सा है, आपको करना है पहले आउटर ब्रैकेट का डेरिवेटिव. आउटर ब्रैकेट का मींस एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट इनटू उसके बाद इनर ब्रैकेट पे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट. कल का ये फॉर्मूला मैंने ये नहीं बताया था, ठीक है. इसको अगर आप लिख रहे होंगे बेटा, मैथ्स के लेक्चर को अगर आप बैठे हो तो बुक और पेन लेके बैठे होगे, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है. कल का जो पढ़ा है वो नोट कर लेना था आपने. आपको क्या करना है? सिंपल, कल का फॉर्मूला मैंने इस वे से बताया था, अब और उसको सिंपल वे से बताएंगे. कैसे? इफ वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है? ब्रैकेट के अंदर के फंक्शन का. मींस पहले बाहर का फंक्शन तो आप एकदम सिंपल वे से करोगे. क्या? इसको कंसिडर ही नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर देखना नहीं है. पहले क्या करना? इसका डेरिवेटिव ले लेना, आउटर डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट. ये लिख लो, बुक पेन लो साथ में और इसको लिखो. समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में जल्दी लिखो 1 मिनट में. समझ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? सर मला को होस्ट चैट बॉक्स की सेटिंग है ना, त्यामुळे मला दिसत नाही. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट. सो इसके थोड़े और लेवल में एग्जांपल के लेवल हम थोड़ी सी हार्ड करते हैं अब, ठीक है. एक इजी एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे. फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1. सी, आपने, मैं रिपीट करती हूँ, बस 1 मिनट में रिपीट करती हूँ, ठीक है. इफ y इज ए फंक्शन ऑफ t, समझ लो अच्छे से, y इज ए फंक्शन ऑफ t,
y इज ए फंक्शन ऑफ t मीन्स क्या होता है sin t cos t to the power t, इसका मतलब ये होता है y इज ए फंक्शन ऑफ t मीन्स we can express y in terms of t. Okay, so if we have to use chain rule and dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करना है मुझे with respect to x, तो क्या होगा dy by dx equals to, and we know that y is a function of t, so we can operate t between y and x. Okay, so we can write dy by dt into dt by dx. इतना आपने 12th में पढ़ा है, क्योंकि ये dt आप ऑपरेट करते थे, सिंपल फंक्शन था, दोनों का डेरिवेटिव करते थे यहाँ पे dy by dt into dt by dx. अब y यानी क्या है, f of t है, y मीन्स फंक्शन ऑफ t है, तो मैं इस y की जगह नीचे f of t लिख सकती हूँ, यस। अब देखो क्या है, d by dt मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f of t, f of t का डेरिवेटिव क्या होगा, f का डेरिवेटिव क्या होता है, डैश होता है, so f dash of t into dt by dx, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज dt dash of x. बट ये नया नोटेशन है, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसीलिए मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको चेन रूल बता रही हूँ कैसे, अगर आपको कोई भी आउटर फंक्शन है और ब्रैकेट में कुछ इनर फंक्शन है और बहुत बड़ा डेरिवेटिव है, ऐसे अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना। क्या है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट, आउटर ब्रैकेट ये जो भी है, आउटर ब्रैकेट और आउटर फंक्शन बोलो। ओके, आउटर फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लो, इसको पहले x कंसीडर करना, समझ रही है मेरी बात, ब्रैकेट के अंदर देखना भी नहीं, इसको x ट्रीट करो, ठीक है। मींस f ऑफ x जो भी है, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लेंगे हम, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, राइट, f डैश ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। अब हम जाएंगे, जब आउटर का पूरा डेरिवेटिव फाइंड होगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में इनर डेरिवेटिव लिखेंगे हम, समझ रहा है। देखो मैं ऐसे तो समझाऊंगी, लेकिन बाय यूजिंग एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेती हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, d by dx ऑफ साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x। बहुत सारे एग्जांपल हमारे नहीं हुए तो भी चलता है, बट तुमको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं समझ रहा है बेटा, चॅट परत दिसत नाही मला, तुम्ही हे करा पोस्ट केलं का। सो d by dx ऑफ, अब देखो साइन ऑफ, आपको तो इतना पता है कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, साइन 3x का डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं, मैंने जैसे कल बताया था। क्या होता है साइन 3x का डेरिवेटिव, ये वाला फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज करती हूँ सो दैट तुमको कंफ्यूज नहीं होगा, मैं एकदम इजी वे से बता रही हूँ। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कैसे, देखो मुझे क्या फाइंड करना है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x और अनदर फंक्शन लेती हूँ, cos ले लेती हूँ, cos ऑफ 3x, मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड dy by dx। हाँ, we know that डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, राइट। बट आपको ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि सिर्फ x नहीं है, यहाँ x के साथ कोई फंक्शन है, मींस इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, समझ रहा है सबको, cos ऑफ दिस ब्रैकेट में 3x, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, चेन रूल, मिस चेन रूल से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मेरा फॉर्मूला मुझे बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। मिस अगर मैं, आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को देखोगे भी नहीं, सबसे पहले आपको आउटर ब्रैकेट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इसको हम x ट्रीट करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको देखो मत। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos, द डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस ऑफ sin 3x, राइट। 3x एज इट इज रहेगा, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो फंक्शन है, ठीक है। मिस मैंने क्या किया, cos का डेरिवेटिव एज इट इज लिखा, cos का डेरिवेटिव लिखा माइनस साइन ऑफ और फंक्शन एज इट इज लिखा, ओके। मिस डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 3x इनटू, चलो अब जाओ ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कौन सा फंक्शन है, 3x मींस d by dx ऑफ 3x, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 एंड
rest of the function as it is sin of 3x. So -3 sin 3x. तो ये एकदम सिंपल फंक्शन को कैसे ये रूल यूज होता है, चेन रूल, ये बताया। अब फंक्शन की लेवल, जो भी फंक्शन है उसकी लेवल हम थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ, अब सिर्फ 3x नहीं रखा, 3x² प्लस x मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब कॉम्प्लिकेटेड जैसे होते जाएगा ना, तुमको टेंशन आएगा कि हमको कैसे करना है सॉल्व। तो आपको सिर्फ एक फंडा ध्यान में रखना है, मैम वीडियो चालू नहीं है। अरे यार, आता झाले ना, देखो अभी दिख रहा है बेटा वीडियो। और क्लियर दिख रहा है जो मैंने लिखा। ब्लर सर, तो एक्चुअली नेटवर्क इश्यू है ना। अब थोड़ा ठीक है। अरे रिपीट कल का ही बताया मैंने cos 3x का। अब क्लियर है? ओके चलो, बघा सर हल्ला तर सांगा, रिपीट करना है cos 3x को, समझा ना। y इक्वल्स टू cos ऑफ 3x, तो आउटर ब्रैकेट का पहले डेरिवेटिव लेना, तब फंक्शन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। दैट इज cos, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस ऑफ sin 3x इनटू, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट लेना है d बाई dx ऑफ 3x, दैट इज माइनस ऑफ 3 sin 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस ऑफ sin 3x। ठीक है, ठीक है, इस फंक्शन से अच्छे से समझ में आएगा, उसको भूल जाओ। समझने दिखने का होगा तो अब ये नया फंक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ। इट इज इक्वल्स टू, चलो क्या है फंक्शन, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x² प्लस x। क्या करेंगे हम, फिर से ब्रैकेट की तरफ नहीं देखना है आपको, ब्रैकेट में जो भी है उसको x ही ट्रीट करना है, सिंगल वेरिएबल छोड़ दो इसको। डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट, सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन। So at first we have to take the derivative of this function, sin function। क्या होगा sin का डेरिवेटिव, cos of 3x² प्लस x। ओके, cos, मैंने क्या किया, sin का डेरिवेटिव लिया, cos हो गया, sin का काम हो गया, जो बाहर था उसका काम हो गया। चलो अंदर जाओ, अंदर कौन सा फंक्शन है, ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। तो मैं लिखती हूँ d बाई dx ऑफ 3x² प्लस x। सो इट इज इक्वल्स टू cos ऑफ, हाँ अब मैं क्या करती हूँ, 3x² प्लस x, ये तो फंक्शन पूरा कंप्लीट है, इसको एज इट इज लिखते हैं इनटू, चलो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ, मैं इतना कंसीडर करती हूँ कि तुमको x टू द पावर n का डेरिवेटिव समझता है। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, कैसे होता है ये तुमको समझता है, कैसे होता है, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, राइट। ये तो एकदम सिंपल है। सो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 6x प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, 1। ओके, 6x प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 6x प्लस 1 इंटू cos ऑफ 3x² प्लस x। गॉट इट? सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन ऑफ 3x² प्लस x। एकदम सिंपल बता रही हूँ। पहले आउटर ब्रैकेट है जो भी, उसका डेरिवेटिव लेना इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। ठीक है, फिर जो है आउटर ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव लिया, नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट लाइन में वो टर्म एज इट इज रखना, आगे आगे सॉल्व करते जाना। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सेम रूल हम यूज करेंगे। ठीक है,
समझ रहा है? बताओ चैट बॉक्स में जल्दी। समझ रहा है? अब दिख रहा है क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जल्दी का नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। मैं एग्जांपल यहाँ साइड में लिख लेती हूँ सो दैट मुझे इजी जाएगा। नेक्स्ट एक के बाद एक हम एग्जांपल डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। e to the power x square minus 3x square plus 9, then next is log of x to the power minus 4 plus x to the power 4. Third one is थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले रही हूँ, e to the power x into in bracket 2x plus 3 का whole cube. Okay, next one is number 4 log of sin 3x. ठीक है, इतने सॉल्व करते हैं, फिर और एग्जांपल्स देखते हैं। वेटिंग रूम। ओके, सो लेट्स टेक दीज एग्जांपल्स। अब आपको इतना फॉर्मूला समझ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ आउटर ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। हाँ चलो, फर्स्ट फंक्शन एक काम करती हूँ, मैं लास्ट पहले लेती हूँ, थोड़ा इजी फंक्शन है इसीलिए। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू log ऑफ साइन ऑफ 3x, चलो क्या होगा बताओ, क्या होगा? dy बाय dx फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हाँ फिर से log ऑफ साइन ऑफ 3x, एक काम करती हूँ। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, मुझे यही समझाना था तुमको कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट अगर आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। log ऑफ साइन ऑफ 3x, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन है उसको देखना ही नहीं है, सबसे पहले आउटर फंक्शन को देखो। विच इज द आउटर फंक्शन? log इज आउटर फंक्शन। तो आपको इस फंक्शन को एज इट इज कैरी करना है नीचे। सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन जो आउटर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। क्या होता है log का डेरिवेटिव? log ऑफ x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x? 1 अपॉन x, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो हम log का डेरिवेटिव लेंगे, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन मींस ये पूरी टर्म आपकी x है, तो ये एज इट इज होगी, दैट इज साइन ऑफ 3x। ओके, log का डेरिवेटिव हो गया। log ऑफ sin of 3x means at first we take outer derivative, that is 1 upon x means 1 upon sin of 3x। ठीक है, चलो अब अंदर आ जाओ, हो गया। अब अंदर आ जाओ, अंदर का डेरिवेटिव आएगा, that is d by dx of, हाँ अब पूरे फंक्शन को sin of 3x as it is। समझ रहा है? इट इज इक्वल्स टू, हाँ ये टर्म तो पूरी बन गई है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, that is sin of 3x into d by dx of sin of 3x। अब फिर से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो हम आउटर ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। विच इज द टर्म इन आउटर ब्रैकेट? आउटर ब्रैकेट कंटेन्स साइन। ठीक है, सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos ऑफ 3x एज इट इज। हो गया, मिस मैंने क्या किया, पहले log को सॉल्व किया, ठीक है, फिर साइन को सॉल्व किया। अब कौन सा फंक्शन बाकी है? सिर्फ एक फंक्शन बाकी है 3x। तो जब तक ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव हम सॉल्व नहीं करते तब तक आपको उसको वो टर्म तक लिखना है। मींस यहाँ पे लास्ट क्या बचा? सिर्फ इतनी टर्म बची है, सो d by dx ऑफ 3x। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू cos of 3x upon sin of 3x into d by dx of 3x। 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 means 3 as it is, that is equal to 3।
एंड इट इज इक्वल्स टू, अब आप ना भी आंसर रखते हो तो भी चलता है, नहीं तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट ऑफ 3x. So this is the derivative, 3 cot of 3x is the derivative of log of sin of 3x. हार्ड लगा था फंक्शन, लेकिन डेरिवेटिव कितने इजीली आ गया है. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, समझ रहे हैं क्या क्या किया हमने, लॉग का पहले डेरिवेटिव ले लिया, उसके साथ उसके साइड के फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया, देन अगेन आउट उसका अंदर का आउटर फंक्शन कौन सा है, साइन, देन साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x एंड लास्ट में पूरे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया. एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, next example, third example, third example number 3, we have to find derivative of e to the power x, means find d by dx of, ऐसे लिखती हूं मैं, e to the power x into 2x plus 3 whole cube, 2x plus 3 whole cube. इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है. किसमें जाएगा ये फंक्शन, क्या होगा, एक्चुअली ये इस फॉर्म का एग्जांपल ही नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आप नहीं बोल सकते हो ना, ये फंक्शन कंप्लीट है, ये भी फंक्शन कंप्लीट है. ठीक है, फंक्शन इनकम्प्लीट कब होता है, इस केस में ये फंक्शन इनकम्प्लीट है, तो इट इज लॉग ऑफ, फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लॉग ऑफ साइन ऑफ फंक्शन कंप्लीट हुआ है. बट यहाँ पे e to the power x into 2x plus होल क्यूब. अब इसका कौन सा रूल से यूज होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, मैंने कल बताया था प्रोडक्ट रूल से होगा. अब ये एग्जांपल लिख लिया है तो इसको मैं प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हूँ. ओके, क्या होगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मीन्स क्या होगा, e to the power x फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. हाँ अब देखो, अब यहाँ पे है आपका चेन रूल वाला प्रॉब्लम. कैसे, 2x plus 3 का होल क्यूब, मीन्स ये फंक्शन एक्चुअली प्रोडक्ट में चेन रूल है. समझ रहे हो मेरी बात, कैसे, इन ये है फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. ओके, बट इफ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन वी हैव टू यूज दैट कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट, आउटर और इनर ब्रैकेट वाला. अब बोलोगे कैसे मैडम, यहाँ पे तो आउटर और इनर ब्रैकेट ही नहीं है, ऐसे आया क्या आपके मन में सवाल, e to the power x फर्स्ट फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है. हाँ, फर्स्ट into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड मींस 2x plus 3 होल क्यूब into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इतना समझा, d by dx of e to the power x. Any doubt? First into derivative of second plus second into derivative of first, e to the power x into d by dx. हाँ, अब इसको हमको सॉल्व करना है. बट अब एक बात सुनो, ब्रैकेट का पावर, ब्रैकेट का पावर क्या होता है, d by dx ऑफ ब्रैकेट का पावर मींस कोई भी फंक्शन का पावर मींस x to the power n and x to the power n minus 1, राइट. बट ये ब्रैकेट में सिर्फ x नहीं ना, यहाँ पे तो फंक्शन है 2x plus 3, राइट. आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ब्रैकेट के तरफ देखना नहीं, मैंने पहले ही बोला है, ब्रैकेट के अंदर देखना नहीं है क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है. क्या है ब्रैकेट के बाहर है, ये अगर मैं इसको x कंसिडर करती हूँ तो x to the power 3, x to the power 3 मींस x to the power n. फॉर्मूला होता है n into x to the power n minus 1, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैं ब्रैकेट को नहीं देखूंगी, सिंपल आप टू द पावर के लिए सॉल्व करोगे. x to the power 3 क्या होता है फॉर्मूला, n into x to the power n minus 1 मींस 3 into ये एज इट इज 2x plus 3 into to the power 3 minus 1 that is 2. हो गया.
यार ऐसा कहाँ, अब आवाज सुनाई दे रही है सर? एक्चुअली नेटवर्क इश्यू बड़ा सा है आज। नहीं तो मैं चैट बॉक्स में, अब स्क्रीन ऑफ है। एक्चुअली बेटा आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वाईफाई थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? प्रोडक्ट रूल यूज किया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में मुझे सर चैट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है सर सामने, e to the power x into x to the power n, x to the power n, then n into x to the power n minus 1 means 2 into 2x plus 3, ये पूरी टर्म का मैंने डेरिवेटिव लिया, इसका काम हो गया। अब कोई बाकी है, कोई बचा है? यस, ब्रैकेट के अंदर टर्म है 2x plus 3, तो मुझे एक बार इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब तक ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप डेरिवेटिव लिखोगे। समझा? अब समझा? मैंने ब्रैकेट के अंदर देखा ही नहीं था, मैंने पहले ये पावर का डेरिवेटिव ले लिया। 2x plus 3 होल स्क्वायर मींस n into x to the power n minus 1 into, अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सिंगल फंक्शन x नहीं ना, पूरा फंक्शन है, सो d by dx of 2x plus 3। ओके, ये होगी ये फर्स्ट टर्म सॉल्व, देन प्लस इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ 2x plus 3 होल क्यूब। चलो e to the power x का डेरिवेटिव, term is e to the power x का डेरिवेटिव, what is the derivative of e to the power x? e to the power x, so it is equals to the power x 3 into 2x plus 3 square into derivative of 2x plus 3. What is the derivative of 2x plus 3? Is 2 plus 2x plus 3 whole cube into e to the power x. So it is equals to, बस थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया है, 2 into 3 that is 6 e to the power x, e to the power x, then 2x plus 3 whole square plus 2x plus 3 whole cube e to the power x. कुछ कॉमन निकलता है? Yes, e to the power x is common and 2x plus 3 whole square is also common. This term is also common. यहाँ पे भी स्क्वायर कॉमन बचा, सिर्फ 6 प्लस यहाँ पे एक 2x plus 3 बाकी है, एक स्क्वायर में मैंने कॉमन निकाल दिया, अब एक यहाँ पे बाकी है वो लिख दिया। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू e to the power x into 2x plus 3 whole square into ये हुआ 9, that is 2x plus 6 plus 3 9. So this is the final answer. अब कुछ डाउट है? कोई डाउट है? Any doubt? Okay. So shall I take next? Next is example number 2. अगर आपको लग रहा होगा मिस लिखना नहीं हो रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 2, log of x to the power minus 4 plus x to the power 4। अब डेंजर लग रहा होगा तुमको, है ना? log of x to the power minus 4 plus find d by dx of d by dx. If we have to find derivative of this function log of x to the power minus 4 plus x to the power 4। देखो आपको फिर से आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने नहीं है, एकदम सिंपल वे से हम स्टार्ट करेंगे। x to the power minus 4 तो आपको ऐसा लगता होगा कि उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाओगे और कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्म ही x to the power n का चाहिए, इसीलिए आप x to the power minus 4 को कहीं नहीं लेके जाओगे, वो एज इट इज वही रहेगा। समझ रहे हो? उसको नीचे लेके जाओगे, फिर 1 अपॉन x to the power 4 करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर और कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे फंक्शन को। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे दिख रहा है मैंने जैसे बताया वो इंस्ट्रक्शन से फॉलो करो। क्या बताया मैंने?
आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लेना है, इनर फंक्शन के तरफ देखना नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? log x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा है 1/x, दैट इज 1 सो डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट फंक्शन क्या होगा? log ऑफ x, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, 1/x मींस x to the power -4 प्लस x to the power 4, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव हुआ? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, ओके। अब क्या है, चलो आओ ब्रैकेट के अंदर है ये टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ इनर टर्म मींस x to the power -4 प्लस x to the power 4 इक्वल्स टू 1/x to the power -4 प्लस x to the power 4 डेरिवेटिव ऑफ, अब we know this formula, x to the power n, again n into x to the power n -1, तो n is, यहाँ पे n क्या है? -4, so -4 into x to the power n into x to the power n -1, -4 -1 -5, समझ रहा है? मींस x to the power -4 का डेरिवेटिव -4 into x to the power -4 -1 that is -5 प्लस x to the power 4 का डेरिवेटिव, आपको तो पता है 4x क्यूब, n into x to the power n -1 that is 4 into x to the power 4 -1 is 3, so 4x। एक मिनट, लाइट का इशू हो गया है, 5 मिनट आपको रुकना पड़ेगा बेटा। फ्लैशलाइट नहीं लगा था, इसके आगे सॉल्व करो, आप करो जल्दी जल्दी। लाइट आने तक आप सॉल्व करो। फॉर्मूला निकाल दो आगे, तुम सॉल्व करो ना, नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करो, 4 को कॉमन निकाल दो आगे, माइनस टर्म जो है पहले प्लस वाली टर्म लिखना, फिर माइनस वाली टर्म लिखो, करो सॉल्व करो आगे उसको। दिख रहा है बेटा? हाँ, क्या किया? 4 कॉमन निकाल दिया, देन टेक 4 कॉमन, देन x क्यूब माइनस x टू द पावर -5 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -4। अब इसके आगे अगर तुमको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो? इसको 1 अपॉन x टू द पावर 5 1 अपॉन x टू द पावर 4 देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फंक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, हम सॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपका गिवन फंक्शन भी x टू द पावर -4 के ही फॉर्म में था, तो आंसर हो सकता है -4 -5 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। एनी डाउट? ओके, कैन आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल? अब मैं ये एक इजी वाला फंक्शन लेती हूँ, फिर इसके साथ थोड़ा हार्ड वाला फंक्शन लेंगे हम, ठीक है। ये एक इजी वाला लेंगे। फर्स्ट d by dx ऑफ e to the power x square minus 3x square plus
9, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो मैं इसको जहां पे ब्रैकेट नहीं दिखता है वहां अपने आप दे दो, क्योंकि मैंने तुमको ब्रैकेट से समझा है। तुम तो बोलोगे मैडम ब्रैकेट तो कहीं था ही नहीं, आपने तो ब्रैकेट वाला समझा है। ऐसे नहीं होता, फंक्शन को आप डायरेक्टली ब्रैकेट दे सकते हो, ठीक है। नाउ टेल मी विच इज द आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन इज ई। मेन फंक्शन है आपका ई टू द पावर में ये फंक्शन। ओके तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लो। e to the power, derivative of e to the power, derivative of e to the power x, e to the power x का डेरिवेटिव होता है e to the power x। तो e to the power x square minus 3x square plus 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, वही सेम e to the power x square minus 3x square plus 9। ठीक है, ये तो हो गया इसका काम। इनटू अब आ जाओ ब्रैकेट में, हो गया आउटर फंक्शन का काम, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव लो किसका, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, एक काम करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता ना, क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब करती हूँ मैं यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। ओके मैंने किया, पहले आउटर का डेरिवेटिव ले लिया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। सो इट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। हाँ अब वन बाय वन सॉल्व करना है आपको। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर 6x plus derivative of 9 is 0. So it is equals to take 3x common, यहां से 3x को कॉमन ले सकती हूँ, क्या बचा x माइनस 2। ओके 3x, यहाँ का एक x बाकी है तो ये x यहाँ पे आया, माइनस 3 कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा 2e to the power x स्क्वायर माइनस x cube minus 3x square plus 9. So this is your final answer. अब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहा तो भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। कोई एग्जांपल दूं तुमको मैं, एक एग्जांपल देती हूँ, ट्राई करो, कल आते बराबर मुझे इसका आंसर चाहिए। होमवर्क, मैथमेटिक्स है तो होमवर्क तो मिलेगा। साइन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। और एक a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। ओके दिस इज योर होमवर्क। कर पाओगे क्या, बताओ कर पाओगे? ओके सो अगर आपको कोई डाउट है मैथमेटिक्स में, फिर से बताती हूँ, यहाँ पे मेरा क्लास एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर फिजिक्स होगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे, मैंने पहले ही बोला, आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है, और कॉल करके भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं जैसे जैसे एक एक टॉपिक की रिविजन लूंगी, आपको वो अच्छे से समझना है, समझना ही चाहिए, ठीक है। मैम देखो कैसे है मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा है, क्योंकि मैथ्स में आंसर नहीं दे पा रहे, एक्चुअली मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अगर कुछ पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी आंसर चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा आपको इसकी आदत डालनी होगी। मैं नेक्स्ट टाइम से, अगर मैंने कल भी माइक ऑन रखा था, पर प्रॉब्लम ऐसे है तुम बहुत बड़बड़ करते हो,
तो वो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देता, इसलिए मैंने माइक को ऑफ कर दिया था। ठीक है, अगर आप बोलते हो तो मैं माइक को ऑन कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मुझे बोलना। अगर आपको आंसर्स देने हैं तो मैथमेटिक्स की क्लास फिर बोर नहीं होगी तुमको। Hello students. Now audible or not? Yes, audible. Okay. So कल के क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में. Then there is one more unit in your syllabus, that is optical fibers. अब हम सब लोग डेटा यूज करते हैं. एक मिनिट, माझा आवाज मला ऐकू येतो. ओके, आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड? So yesterday what we have seen about the crystal structure. Now one more unit in your syllabus, that is the optical fibers. तो हम जो भी डेटा यूज करते हैं तो that there is a transfer of data with the help of optical fibers. BSNL का ऑफिस अगर आपने देखा होगा तो वहां पे आपको ऑप्टिकल फाइबर्स की एड दिखेगी. So that optical fiber is used in electronics, but the physics behind it you have to learn in this topic. So what is the physics and what phenomenon principles we are using in optical fiber and how data get transferred from source to the destination, that you have to study in this topic. तो उसके लिए कुछ हमें चीजें पढ़नी है जो आपने 12th में पढ़ी है. दैट इज रिफ्लेक्शन, जो हमने कल थोड़ा रिवाइज किया था.
So there are two terminologies, reflection and refraction. त्यांना मॅडम अनम्यूट करा. बोलतात ना एकमेकांचा आवाज येतात. Okay. So there are two phenomena, that is reflection and refraction. So reflection. अगर किसी को आंसर देना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. तो जब आपको आंसर देना है तो भी अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज माइक. Follow the instructions clearly. Mute your mic. Okay. And those who like to answer, they can only unmute their mics. Okay. So there are two phenomena and refraction. So what happens in reflection? So there is one smooth surface. Reflection can happen in both surfaces, that is smooth as well as rough. तो अगर हमने एक smooth surface consider किया, the ray is incident on it. योगी 12 बजे. Mute yourself. Unmute all the participants. There is a two phenomenon, that is reflection and refraction. So when a light is incident on a smooth surface, and if the ray is bounced back into the same medium, then it is known as the reflection, and it is nothing but the reflected ray. So the angle made by reflected ray with the normal, it is known as the angle of reflection. So there are two terms, that is reflection and refraction. अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं reflection. So there is a smooth surface, the ray get incident on the surface. Actually तुम्ही mute झाले. Okay, I am repeating the same thing. Listen carefully. So there is smooth shiny faces or smooth surface, then the ray is incident on it. So this ray is known as the incident ray. Then if the ray is bounced back into the same medium, it is known as the reflection, or that is the reflected ray. Now the ray is incident on the surface. So we draw a normal or perpendicular to this plane. So the angle made by this incident ray with the normal, it is known as the angle of incidence, and it is denoted by small I. Now if the ray is reflected back or it is bounced back into the same medium, then that ray is known as the reflected ray, and the angle made by this reflected ray with the normal, it is known as the angle of reflection. So I is equal to R. Now there are three laws of reflection. You know this? I think so. So how many laws of reflection are there?
how many laws of reflection? 2. Actually, there are 3 laws of reflection. First law is what? Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is sine of, you can say I is equal to R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is the first law of reflection. Then angle of incidence, this is normal, and angle of reflection both lie in the same plane. That is the second law of reflection. So angle of incidence, angle of reflection and normal lie in one plane. And third law of reflection is that this normal is divided into 2 equal parts and they are on the either side of the normal. दोनों अलग-अलग side में हैं. That angle of incidence is on one side of normal and angle of reflection is on another side of the normal. So this is normal is dividing it into 2 parts. That is, one is the angle of incidence and another is the angle of reflection. So that is the third law of reflection, that incident ray and reflected ray are on different sides of normal. Madam, please provide another pen, please. So these are the 3 laws of reflection. That is, angle of incidence is equal to angle of reflection. Then angle of incidence, angle of reflection and normal, all 3 lie in the same plane. And this normal divided into 2 parts. So incident ray and reflected ray are on the other side of the normal. So these are the 3 laws of the reflection. Then next is what? Refraction. So in case of refraction, there are 2 medium. Reflection is occurring in the same medium, but for the reflection we need 2 medium. Then these 2 mediums are with their density. So they are known as the rarer medium and the denser medium. So it is the partition or boundary between the 2 medium. Let us assume here it is air medium and here it is water or glass medium. So here air is called as the rarer medium and water or glass, it is known as the denser medium. Now when the a ray is incident on the surface, so it is known as the incident ray. Now we draw a normal. नॉर्मल कहाँ पे निकालेंगे हम? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने टच किया. So the angle made by incident ray with the normal, it is again known as the angle of incidence. Okay, it is denoted by small I. Now as there is a change of medium, यहाँ पे क्या हो गया? Medium change हो गया, so there is change in path. इसका जो path है वो change हो जाएगा. It should go straight, but because of the density of the medium, there is change in the path of the ray and it gets refracted into that medium. Here it gets reflected, here it gets refracted into the medium, and that ray is known as the refracted ray. And
the angle made by this refracted ray with the normal, it is known as the angle of refraction. So this is the refraction. अब इसमें बताओ मुझे differences क्या होंगे? What are the similarities and differences in the reflection and refraction? That is the assignment for you. Next class जब होगा तब पहले मैं आपको ये पूछूंगी. Okay? So reflection and refraction. Reflection में क्या है? The ray is incident on a smooth surface and it is bounce back into the same medium. That is known as the reflection. यहाँ पे सिर्फ एक ही medium हमने देखा है. It is happening, occurring into the same medium. Then incident ray और normal में जो angle है, it is known as the angle of incidence. Then reflected ray और normal में जो angle है, it is known as the angle of reflection. Here I is equals to R. जितना angle of incidence रहेगा उतना ही angle of reflection रहेगा. Okay. So this normal divided into two equal parts. Whereas in refraction, what happens? There are two medium. One is known as the rarer medium and another is known as the denser medium. So a ray is incident on a surface. That's why it is known as the incident ray. Now as the ray is entering into the denser medium, there is a change of path, and because of that, the ray is known as the refracted ray. So there is change in path of the ray, and that ray is known as the refracted ray. So the angle made by refracted ray and normal, it is known as the angle of refraction. So in this case, now here one more term, that is N1 and N2. N1 is known as the refractive index of air and N2 is known as the refractive index of water or glass. तो reflection में क्या था? Angle of incidence is equal to angle of reflection. But in case of refraction, there is N1 sin I equals to N2 sin R, or we can write sin I by sin R is equal to N2 by N1. So this is the expression for ये क्या है? It is known as the Snell's law. इसका हमने ये इक्वेशन हमने कल देखा था. तो स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन है आपको इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स में. दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस. सो स्नेल्स लॉ किसके लिए है? लाइट के लिए है. तो जैसे लाइट बिहेव कर रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, ये हम अज्यूम करेंगे. एंड फॉर इलेक्ट्रॉन देयर इज अ बेथेज लॉ. So Bethes law is equivalent to the Snell's law. So sin I by sin R equals to N2 by N1. Now this is reflection and refraction. Then one more term is there, that is known as the critical angle. Now that you have to study. यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी थी? Reflection light bounce back in same medium, and in reflection light refracted towards the north. Now critical angle. अब रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा? दैट देयर इज अ I इज इक्वल टू R इन रिफ्लेक्शन. In reflection, I is equals to R. Means as we increase the angle of incidence, angle of refraction, angle of reflection also increases.
And if we write in refraction, रिफ्रैक्शन में क्या है, साइन I by sin R is equal to N2 by N1. Okay, so in case of refraction, sin I by sin R equals to N2 by N1. Now you know in case of refraction, what happens? Angle of incidence I, and this ray come towards normal in case of refraction. अब हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाना है. यू हैव टू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जैसे ही हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या होगा, सो इट अगेन मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. और ऐसे ही हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाती जानी है. कब तक, when it touches to the normal, means the value of angle of incidence at that point, angle of refraction is 90 degree, then that angle of incidence is known as the critical angle. This is what angle of incidence. critical angle क्या होता है, ये angle of incidence है और उसके लिए हमें कुछ angle of refraction मिला. Okay, so this R is moving towards the normal because there is a change in path and there is a change in medium. तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जानी है. और कब तक बढ़ानी है, जब तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्रीज नहीं होती और इट टचेस टू द नॉर्मल. तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा, इन दैट केस तब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू रहेगी, दैट इज नोन एज द critical angle. Okay, so what is critical angle? The angle of the value of angle of incidence at which the angle of refraction is 90 degree, then that angle is known as the critical angle. And critical angle we can write it as theta I equals to theta C. So theta I is nothing but the angle of incidence and theta C is nothing but the critical angle. अब ये कब होगा, when there is critical angle condition. So when the ray is reflected from denser medium, denser से जब rarer medium में आएगा. अब तक हमने क्या पढ़ा, एयर और वाटर था. So the ray is coming from rarer medium and going into the denser medium. But ये critical angle की वैल्यू कब मिलेगी हमें, when the ray is traveling from denser medium to the rarer medium. और जब critical angle की वैल्यू रीच हो जाएगी तब क्या होगा, that instead of refraction the ray is reflected back into the medium. जब angle of incidence की वैल्यू, ये critical angle इतनी हो जाएगी, तब क्या होगा, there is no refraction and the ray get reflected inside the medium, and that phenomenon is known as the total internal reflection. And total internal reflection is the basic principle of optical fiber. तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, what is critical angle. So in case of reflection, you know that angle of incidence is equal to angle of reflection. But in case of refraction, refraction अब तक हमने कैसे पढ़ा, that the ray is traveling from rarer medium to the denser medium. So when the ray is traveling from rarer medium to the denser medium, what happened? There is incident ray. So the angle made by incident ray with the normal is known as the angle of incidence. And as the ray changes its path and goes into another medium, the ray move towards the normal. वो normal की तरफ जाएगा. And that ray is known as the refracted ray. So there we get angle of incidence is equal to angle of, that is angle of incidence and angle of refraction. उसका relation कैसे है, sin I by sin R equals to N2 by N1. Okay.
नाउ द टर्म इज व्हाट? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसे बोलेंगे? ये क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट कब आएगा? व्हेन द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम के अंदर रे आएगा, at that time what happened? We have to increase the value of angle of incidence. angle of incidence की वैल्यू हमें क्या करनी है? बढ़ाते जानी है। कब तक? जब तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्रीज नहीं होती तब तक। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। So when the angle of refraction becomes 90 degree, the angle of incidence is known as the critical angle. And it happens when the ray travels from denser medium to the rarer medium. So at that condition, theta equals to theta c. Theta c, it is nothing but the critical angle. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin I can be written as sin theta c. Then angle of refraction की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री, and it is n2 by n1. So sin theta c, sin 90 क्या होता है? It is the 1. So it is n2 by n1, or we can write sin theta c equals to n2 by n1, or theta c equals to sin inverse of n2 by n1. So that is nothing but the critical angle. ये critical angle कब मिलेगा? When the ray travels from denser medium to the rarer medium, and because of that refraction is not possible and the ray is reflected back into the medium. The reflected back into the same medium, and it is known as the total internal reflection, and that is the basic principle of the optical fiber. Optical fiber का जो वर्किंग चलता है वो किस पे बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे. सो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. It is denoted by TIR. So it is the total internal reflection. Now how there is a optical fiber? तो ऑप्टिकल फाइबर अगर आप देखोगे, so it is as thin as your hair. हमारा एक जो बाल होता है उतना पतला वो होता है, that is the optical fiber. और उससे हम इतना डेटा ट्रांसफर करते हैं. So there are 3 layers in the optical fiber. They are known as the core, cladding and jacket. So core is the innermost part of the optical fiber, then core is covered by the cladding and cladding is covered by the jacket. So core is the innermost part जिससे data transfer होता है, that is nothing but the core. Then core is covered by the cladding. Cladding किसके लिए है? कि उसके अंदर जो data है it should not get disturbed. So it is protective cover to the core, that is nothing but the cladding. And jacket is cover for cladding so that no physical changes happen in this. अगर धूप है, ज्यादा पानी है, तो उसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए इस कोर और क्लैडिंग को. इसके लिए हम क्या, यहाँ पे क्या है, थर्ड लेयर इज ऑफ
jacket. So core, cladding and jacket, these are the main parts of the optical fiber. और जो हमने अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा वो कहाँ पे होगा? इनसाइड द कोर. So the ray gets so the concept of total internal reflection in case of optical fiber. Now this is core and this is cladding. तो कोर में क्या रहेगा? The medium is air, means it is the rarer medium, and this is cladding, so that is the denser medium. So when the ray is incident inside the fiber, what happened? It comes into the fiber, and that हमने यहाँ पे जो देखा that there are two medium, that is this is denser medium and this is rarer medium. तो जब ray denser medium से rarer medium के अंदर आता है, at that time the angle of incidence becomes equal to the critical angle. मतलब वो जो angle of refraction है वो कितना बन जाएगा? It is equal to the 90 degree. So in that case refraction is not possible and the ray is reflected back into the same medium. So the ray get reflected into the medium, and because of reflection the data get transferred from one side to the another. So that is the basic principle behind the optical fiber. जो हम data transfer करते हैं वो कैसे transfer होगा? With the help of total internal reflection, and that is the basic principle behind it. तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हो. आपको अनम्यूट किया जाएगा. And after that you have your chemistry class. ये अभी डिटेल में आपको जब यूनिट स्टार्ट होगा तब पढ़ना है. सो दीज आर जस्ट रिवीजन क्लासेस. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा था उसका ही अभी रिवीजन शुरू है. जब हम पूरा ये ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे फिर से पढ़ने हैं. इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपको ये ऑप्टिकल फाइबर क्यों पढ़ाने वाले हैं ये सब आपको तो जानना है. तो कुछ डिफिकल्टी है क्या आपको? नो नो मैम. नो मैम. मैम तो थीटा सी की वैल्यू? नो मैम. बोलिए थीटा सी. हाँ मैम वो थीटा सी की वैल्यू आपने 90 डिग्री ली ना? Angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. तो थीटा सी ये इंसिडेंट एंगल से रिलेटेड है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से नहीं. इसके बाद है जैकेट, दैट इज नॉट शोन हियर. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ कोर में हो रहा है इसलिए यहाँ पे कोर और क्लैडिंग बताया है, बट इट इज कवर्ड विद द जैकेट. जैकेट इज आल्सो डेंसर मीडियम. लेकिन वो सिर्फ किसके लिए? फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए है. जैकेट इज देयर ओनली फॉर द फिजिकल प्रोटेक्शन. जैसे हमारे घर में वायर्स होती है, दे आर मेटेलिक, कॉपर के वायर्स होते हैं एंड दे आर कवर्ड विद द प्लास्टिक, नथिंग बट द इंसुलेटर. इससे किसी को करंट नहीं लगना चाहिए, इसके लिए वो कवर होता है. वैसे ही यहाँ पे जैकेट होगा. So there is no role of jacket in total internal reflection. पूरा जो total internal reflection का study करेंगे, it is all related with the core and cladding. Okay then,
continue with your chemistry class. Thank you, ma'am. 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 Allah. Thank you, ma'am. Okay. Hello. 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 Yes. Am I audible? Yes, Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. So let us start with our session. आगे क्या पूरे लोग? Everybody is Yes. Yes, sir. okay. Okay. So let us begin with our lecture. And if you remember, yesterday we have started discussion on water. Initially, we have discussed about the इलेक्ट्रिसिटी. यस Hardness. हाँ, हार्डनेस हमने किया था. उसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यानी करंट वगैरह इसके ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह yesterday we have discussed. So today we are going to discuss about the हार्डनेस क्या होता है. हमने कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ने के बाद हमने ये भी देखा कि दैट कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर. और जब वाटर की बारी आई कि उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसमें प्रेजेंट आयंस, तो उसके वजह से हम लोगों ने ये देखा कि देयर आर फ्यू आयंस बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी और से द वाटर इज हार्ड, है ना. तो ये चीज हमने कल देखी थी. अब अगर इफ दिस इज द केस देन वी कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ फ्यू आयंस. सो आपको क्या लगता है कौन से आयंस हो सकते हैं? हेलो, कौन से आयंस के वजह से वाटर हार्ड होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव आयंस यानी कौन से आयंस हो सकते हैं? H plus ions. H प्लस आयन की वजह से वाटर हार्ड होगा क्या? Magnesium and calcium. Magnesium carbonate. Yes, magnesium and calcium, that is the positive ions which are responsible for the hardness. If there are positive ions, it means that definitely there will be negative ions, है ना, जिसको anion बोलते हैं. अब इसमें negative ion कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम तो पॉजिटिव हो गया. सोडियम पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम पे नेगेटिव चार्ज रहेगा क्या? अपने पास कौन से कैल्शियम है? कैल्शियम की हाँ क्लोरीन फॉस्फेट. क्लोरीन. ओके, क्लोरीन फॉस्फेट ले सकते हैं. अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि अगर आप देखते हो तो इसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. और इन दैट केस जैसे कि आप देखते हो कि हार्डनेस जो होता है इट इज ड्यू टू कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स. अब क्लोराइड्स देखते हो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना. फॉस्फेट देखते हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. कार्बोनेट्स देखते हो. बेटा आपका किसी का माइक चालू है, थोड़ा सा बंद कर दो नहीं तो ये आवाज ना डिस्टर्ब हो जाएगा. किसी का तो माइक चालू है, उसको बंद कर दीजिए. ओके,
तो अगर आप देखते हो तो वी कैन सी दैट दिस हेलो हेलो अरे अरे हेलो हाँ थोड़ा सा ये आपके माइक ऑफ कर दो, आपके यहाँ क्या घर में जो आवाज गाने के वगैरह आ रहा है, इट इज नॉट गुड. सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट switch off your phones or keep it on silent mode. Okay, anyway, so take care about this thing. So we were discussing about the water and its hardness, and before going to that part हमको just एक शुरू करेंगे. As you know, this is a basic course, basic discussion about hardness and all. First of all, I guess in 12th you have learned what are the different sources of water. So what are the different sources of water? River, lake, pond, well. Hmm? River, lake, pond, well. और रेन ओके रेन भी ले सकते हैं. और क्या होगा? और क्या होगा? बोरवेल. बोरवेल. ओके चलो बोरवेल भी ले सकते हैं. एनीथिंग एल्स? डैम. डैम ले सकते हैं. Pond. पॉन्ड ले सकते हैं. सी ले सकते हैं. ओके चलो सी भी ले सकते हैं. सो अगर आप देखते हो तो पानी इज इज थोड़ा है कि ज्यादा है ऑन द अर्थ सरफेस? 71% वैसे बहुत ज्यादा है सर, लेकिन यूजेबल बहुत कम है. यूजेबल बहुत कम है, वैसे बहुत ज्यादा है. और उसमें का भी यू कैन सी दैट इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज आइस. And we have learned, or you have learned in the school, that due to this global warming, that ice is melting and it is increasing the level of water in sea, which could be problematic. तो ये चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब इन्वायरमेंट का वगैरह टॉपिक आएगा तो. लेकिन फिलहाल के लिए ये जो पानी है, as you see the natural sources of water, we can see that there are three types of natural sources of water. First, rain water, as you know. सेकंड, सरफेस वाटर, जहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिए थे सी, लेक, रिवर, डैम, ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद आप लोग देख सकते हो अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर यानी वेल, स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स मालूम है ना आपको? वेल, कुएं तो मालूम होंगे, स्प्रिंग्स मालूम है क्या आपको? वो वोल्केनोस, मतलब जो अंदर से पानी आता वाला. अरे नहीं रे, वोल्केनो नहीं, ये पानी के झरे. एग्जैक्टली, जहाँ पे नेचुरली जमीन के अंदर से आता है ना थोड़ा सा पानी कहीं पे, तो जिसके ऊपर से कुआं जब खोदते ना आप, अगर कुआं जब देखा होगा तो कहीं तो ऐसे जीवन झरे बोलते हैं. हाँ नहीं, बोरवेल जब खोदते हैं. बोरवेल अलग हो गया, वो ड्रिल करते हैं नेचुरली. लेकिन कुछ जमीन होती है ना, वहाँ पे पानी ज्यादा रहता है. अगर आप वो कुएं में देखो ना, क्यों ना कुछ कुएं ऐसे जिंदा है बोलते हैं, जीवंत कुएं बोलते हैं. उसके पीछे रीजन होता है कि वहां पे जो झरे रहते हैं, पानी आते रहता है. सो दैट इज द थिंग. सो दैट बेसिक थिंग आप लोगों ने देखे होंगे. नाउ इन दिस केस, अब ये जो पानी है इसमें सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होता है? रिवर का होता है. रेन का होता है. श्योर? रेन वाटर. एग्जैक्टली. अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड सबसे प्योर फॉर्म होगा क्या? रेन. रेन. क्यों रेन का क्यों होगा? सर फ्लोइंग वाटर. अच्छा, आप बोल रहे हो कि एक बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है रेन वाटर. मिनरल वाटर. मिनरल वाटर नहीं, मैं नेचुरल सोर्सेस अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. स्प्रिंग वाटर. हाँ, रेन वाटर होगा सर. रेन वाटर होगा, स्प्रिंग वाटर होगा. तो क्या लगता है? हाँ, रेन वाटर. क्यों रेन वाटर क्यों है? सर डिस्टिल्ड वाटर. वो वेपर से बनता है. वेपर से बनता है. ठीक है, गुड. अब बाकी के लोगों का क्या कहना है? बाकी जो आप लोग बोल रहे हो स्प्रिंग वाटर वगैरह. सर डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल. सर फ्लोइंग वाटर. सॉरी, हेलो. फ्लोइंग वाटर. फ्लोइंग वाटर यानी नदी का बहता हुआ पानी. बहता हुआ पानी नेचुरल सोर्सेस में सबसे साफ रहेगा क्या? हाँ. रेन वाटर ही है. ठीक है. सर सी और लेक से बेहतर है ना वो स्टॉपेज. ठीक है, काम कर दे. इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया कि हार्डनेस से जाने से पहले we will discuss about the various ways of this water.
आपके पास जो पानी आता है तो अलग अलग ये जो टाइप्स है इसमें थोड़ा सा हम फोकस डालते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा भी होगा, तो उसको थोड़ा सा हम ना क्या करते हैं कि सिस्टमेटिकली थोड़ा एक बार देख लेते हैं। नाउ एज वी आर सेइंग दैट इन दिस वाटर देयर कुड बी अ इम्प्योरिटीज, ठीक है, इस पानी के अंदर इम्प्योरिटी होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो इम्प्योरिटीज होती है, क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है पानी के अंदर? डस्ट, डर्ट, सॉइल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हार्मफुल viruses, fungi, जर्म्स, जर्म्स और lead, minerals such as iron and manganese. ओके और sir, harmful minerals like lead, ओके और कुछ Suspended solids, ओके और dissolved bacteria, impurities or केमिकल्स, और क्या हो सकता है? बस इतना ही चीजें हो गई। ओके, एनीवे हम देखते हैं वन बाय वन। अगर आप इम्प्यूरिटीज में देखते हो तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, एंड दीज 4 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, colloidal particle, dissolved particle, and biological impurity. So all these are responsible for the water and which contribute for the, we can say, pollution of water, or it, due to that one we cannot use directly. For example, we cannot use the river water as it is, or we cannot use the sea water for drinking purposes, है ना? तो ये इसका एक प्रॉब्लम हो जाता है। Now in this case we can see that the first we start with the suspended particles. Suspended particle, if you look at the suspended particles, then this particle size is more than 1000 angstrom unit. Angstrom unit आपको मालूम है ना इसका यूनिट? angstrom 1 angstrom is equal to 10 to the 10 to power the power minus minus 10 meters. 10 to the power minus 10. -9। 9 आएगा क्या? 9 हाँ होगा सर। तो 9 आ जाएगा तो क्या आएगा फिर? नैनो किसको बोलते हैं? 10 raised to power -10 -10 आएगा, -10 आएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये होते, तो यहाँ पे जो होता है साइज जो इनका बड़ा होता है। अब ऐसे जो आपको यू कैन सी दोज पार्टिकल्स बाय नेकेड आईज, आप आंखों से भी देख सकते हो। तो पानी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, आप आंखों से देख सकते हो? क्या क्या हो सकता है? plastic, papers, wood pieces, ओके, प्लास्टिक, पेपर, वुड पीसेस, leaves, ऑयल। ओके, कभी कभी उसमें मिट्टी भी होती है ना? कभी कभी रेती होती है ना? So in this case, this impurity particles like solid, sand, organic waste. Organic waste का मतलब होता है, organic का मतलब होता है, organic chemistry deal with नेचुरल, made up of carbon, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जिस वेस्ट में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे वेस्ट कौन से हैं? वुड होगा, एग्जैक्टली, या फिर डेड मरीन एनिमल्स रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, डेड बॉडीज उनकी। तो दैट इज द थिंग ओवर देयर। So this is present in the water and which are visible and having particle size greater than 1000 angstrom unit, and they can be separated simply by filtration and sedimentation. यानी आप उस पानी को अगर आप फिल्टर करते हो then we can remove this impurity, ठीक है? तो आपको इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड है आपका कोलाइडल इम्प्यूरिटी। अब कोलाइडल इम्प्यूरिटी में अगर आप देखते हो तो कोलाइडल इम्प्यूरिटी क्या हो सकती है, कुछ अंदाज? सर जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। एग्जैक्टली, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। फाइन सस्पेंडेड सॉलिड है तो क्या होगा उसके वजह से? फाइन सस्पेंडेड सर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल है तो उसके वजह से क्या होता है? वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की, मिल्की या दूसरा शब्द है, तुमको कंसेप्ट डर्टी डर्टी हो जाता है, उसका और एक शब्द है। चलो आप सोच रहे हो, अच्छी बात है।
तो वहां पे क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो, the size of this colloidal particle is 10 to 100 angstrom unit and colloidal size make water turbid, है ना? उसको टर्बिड बोलते, मिल्की नहीं बोलते। टर्बिड यानी जिसको मराठी में आप बोलते हो ना गड़ूड़ पानी, देखा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो वो हाँ कैसे सर। रहता है? मोस्टली आप रेनी सीजन में देखते हो, जब बारिश वगैरह आती है तो बारिश का जो पानी रहता है वो आपने देखा होगा, वो टर्बिड रहता है, रास्ते से वगैरह जो जाते रहता है उसमें एक यस अलग सर। सा। हाँ, तो वो चीज आपने देखी होगी। या बारिश के सीजन में कारपोरेशन का भी पानी थोड़ा सा टर्बिड आ जाता है। सो दिस इज द थिंग एसोसिएटेड, अब इसको टर्बिड होता है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, दे आर कोलाइडल पार्टिकल। आपने पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं 11 12 में? यस सर। हाँ, कोलाइडल पार्टिकल यानी क्या होता है उसमें? चलो मैं सर आपको केमिकल ऐड करते हैं केमिकल ऐड करते हैं, क्यों? सर वो पानी को स्वच्छ बनाने के लिए। स्वच्छ बनाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन जो आपके कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, उसमें केमिकल आप बोल रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों केमिकल ऐड करना पड़ता है? ताकि वो इम्प्यूरिटीज से बॉन्ड करके उनको सेटल कर सके और प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर सके। एग्जैक्टली, लेकिन केमिकल ही क्यों? फिल्टर करके भी निकलने चाहिए ना। सर वो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं जो फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं निकल सकते। निकल जाएंगे। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उसके ऊपर ना निगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये पार्टिकल जो होते हैं ना, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा उसके वजह से? पार्टिकल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? क्या लगता वो है? वो हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लेंगे। हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लेंगे? नहीं। अगर पार्टिकल के ऊपर, आपको मालूम है पार्टिकल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होता है? कोई भी आपने पढ़ा होगा ना कि पार्टिकल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होता है? आपको, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन ऊपर, हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। 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 करेक्ट। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के पास आ जाए तो वो आ सकते हैं क्या? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा, एग्जैक्टली। वही चीज इन पार्टिकल के साथ भी होती है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब ये निगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो एक रिपल्शन दिखाई देता है। एंड ड्यू टू दैट वन, कि आप लोग देखते हो कि ये पानी अगर एक आधे बीकर में आपने लेके रख दिया, फिर भी वहां पे वो टर्बिडिटी जो रहती है ना, वो धुंधला सा जो कलर दिखता है वो कम नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल जैसे नजदीक आते हैं वो रिपल्शन दिखाते हैं। और एकदम पार्टिकल साइज कम होता है, लाइट वेट होते हैं, तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। और इसके लिए आप जो बोल रहे थे ना कि उसमें केमिकल ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई दे ऐड द केमिकल। अब ये जो केमिकल ऐड करते हैं, ये केमिकल कौन सा होता है? एलम। एलम होता है। वाई एलम? एलम डालने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा? हाँ, हेलो, सर उसका pH 7 कम होता है शायद से। पीएच कम हो जाता है एलम की वजह से? सर कंफर्मली नहीं पता। अच्छा ठीक है, सिंपल सा आप लॉजिक की बात करो। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली एलम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। 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 हाँ, पॉजिटिव चार्ज आप कर रहे हो, यहाँ पे चार्ज आप बैलेंस कर रहे हो। इसका मतलब है इसके पीएच के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा, नहीं। इसके ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही चीज हो जाती है कि आप जैसे उसमें एलम का इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं दे गेट एडजॉर्ब ऑन दैट सरफेस। उसका जो है अट्रैक्ट करता है, वो उसके सरफेस के ऊपर आके बैठ जाता है, और वो पूरा सा ऐसा आप देखते हो चंग बोलते हैं ना, एक झुंड बन जाता है उनका, और उसके वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। और जैसे वेट बढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो सेटल हो जाता है। इसलिए घर में आपने देखा होगा कि जब बारिश के सीजन में ऐसा पानी आता है तो आपके घर में आपकी माता जी क्या करती है, वो पानी एक बर्तन में हाँ वो लेती है, उसमें एलम का इस्तेमाल करती है और थोड़ी हाँ देर के लिए एज इट इज रख देती है।
थोड़ी देर के बाद आप लोग देखते हो कि पूरा जो होता है पानी, वो जो उसमें जो टर्बिडिटी है वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, फिर डायरेक्टली यूज करते हैं क्या उसको? छानते। नो सर। फिल्ट्रेशन करते हो उसका। वेरी गुड। तो उसको फिल्टर करते हो, तो दैट इज द बेसिक थिंग। अब ये जो आप बोलते हो जिसमें आप एलम ऐड कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलाइडल इम्प्योरिटी नहीं, कोलाइडल एलम जो ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं आप कोagulation। कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इम्प्यूरिटीज आर वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर एंड दे डू नॉट सेटल डाउन, जैसे हमने डिस्कस किया। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या आवाज कम आ रही है? अब देखो यस सर ना। अभी। ओके, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जनरली द कोलाइडल पार्टिकल्स इन वाटर आर नेगेटिवली चार्ज एंड सेपरेटेड बाय कोएगुलेशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो जो मैं आपको वर्ड बोल रहा था ना, ये कोएगुलेशन है। यानी आप जो एलम का इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। उसके बाद सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब ये जो आपका पॉट है जिसमें आपका टर्बिड वाटर था, उसमें आपने एलम ऐड किया और उसको कुछ 1-2 घंटे के लिए एज इट इज विदाउट डिस्टर्बिंग रख दिया, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एंड देन एक बार जो आपका जो भी वहां पे इम्प्यूरिटी थी वो सेटल डाउन हो गई, देन वी फिल्टर इट, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड स्टेप को फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो यानी 3 स्टेप में आपका ये इम्प्यूरिटी भी पानी से निकल जाती है। नाउ इसके बाद थर्ड था अपना डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज। अब पानी के अंदर क्या क्या डिजॉल्व हो सकता है, कुछ अंदाजा? सॉल्ट। शुगर। शुगर। शुगर हो सकती है, सॉल्ट हो सस्पेंडेड सकता है, सॉलिड। और और क्या होगा? सोडा। सोडा, लेमन। लेमन, अच्छा केमिकल्स। हाँ केमिकल्स, और क्या होगा? पॉइजन। और क्या होगा? सॉल्युबल मिनरल्स। सॉल्युबल मैटर रहते हैं। वेरी गुड, सॉल्युबल मैटर रहेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे बोल रहे हो उसमें कुछ सॉल्ट्स रहेंगे, और उसमें सॉल्ट के साथ और क्या रहेगा? गैसेस होने के चांसेस है क्या उसके अंदर? यस सर। मे गैसेस बी हो सकते, मे बी। कैसे, क्या गैसेस कैसे होंगे? लिक्विड। वाटर के सरफेस पे सेटल रहेंगे सर गैसेस। वाटर के सरफेस पे, ओके ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट दैट वेरियस मेटल सॉल्ट्स लाइक NaCl, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा आर वाटर सोल्यूबल। आप लोगों को मालूम है NaCl, आप लोगों ने देखा होगा। NaCl यानी आपका टेबल सॉल्ट, घर में जो आप नमक इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, है ना? आपने देखा है पानी के अंदर वो डिजोल्व हो जाता है। So such salts are present in water. It is same with the other metal salts also. These inorganic dissolved impurities are removed from water by chemical treatment. इसको chemical treatment के इस्तेमाल करते हैं and they can remove this one. अब आप लोगों ने कुछ chemical treatment पढ़े क्या 11-12 में पानी साफ करने के लिए? डिस्टिलेशन। स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग, ओके चलो स्क्रीनिंग से ठीक है, लेकिन उससे सस्पेंडेड पार्टिकल चले जाएंगे। और चारकोल सर। हाँ, चारकोल। स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन ठीक है। चारकोल से मेटल, ये आपने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, चारकोल से निकल जाएंगे क्या? चारकोल इज यूज फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स बेसिकली। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से डिजोल्व, उसमें आपको दिखता ही नहीं ना। सेडिमेंटेशन के लिए उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल चाहिए, ये तो डिजोल्व है। डिस्टिलेशन से? डिस्टिलेशन से कैसे होगा? हाई टेम्परेचर पे बॉईल के तो वेपर से निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे जो बोला है ना केमिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें इसको केमिकल कुछ ऐड करते हैं। केमिकल ऐड करने के बाद ये प्रेसिपिटेट होके उससे बाहर आ जाते हैं। तो प्रेसिपिटेशन। हाँ वही प्रेसिपिटेशन, जिसको क्विंचिंग बोलते हैं। सो दे ऐड सम केमिकल्स, तो इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और ये बाहर आ जाते हैं। बाद में इसको फिल्टर करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज। सेकंड, गैसेस।
अब गैसेस आपको मालूम है, वी हैव इन आवर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, SO2, अमोनिया, H2S, CO2, ये गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आप लोगों को मालूम है। एंड ऑल दीज गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। नाउ these dissolved gases are easily removed from water by warming the water or mechanical deaeration. Okay, so in that case we can see that can be removed by वार्मिंग ऑफ वाटर और मैकेनिकल डीएरेशन। आपने घर में कभी पानी को ऐसे बॉईल होते हुए देखा है क्या? Yes, हाँ, sir. आप जब वार्म करते हो उसको थोड़ा सा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि शुरू में वहां से बबल आना शुरू हो जाते हैं पानी में, है ना? हाँ, वो गैसेस, उसमें जो गैसेस डिजोल्व होते हैं ना, वो बाहर आता है। मैकेनिकल डीएरेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये मैकेनिकल डीएरेशन यानी क्या होता है? डीएरेशन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर गैसेस है लिक्विड के अंदर, उसको निकालना, तो उसको डीएरेशन बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, मैकेनिकल डीएरेशन, और मैकेनिकल का मतलब है कि हम लोग वहां पे मैकेनिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैकेनिकल डीएरेशन आपका वहां पे हो जाता है। दैट इज द थिंग। मैकेनिकल डीएरेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल के लिए इतना नाम आप याद रखो कि वी कैन रिमूव द डिजोल्व गैसेस। उसमें भी सेम प्रोसेस होती है कि पानी को थोड़ा सा 50 to 60 डिग्री को हीट करते हैं, लेकिन उसको वैक्यूम पंप लगाया होता है, तो वैक्यूम पंप की वजह से उस मशीन में से सिर्फ गैसेस बाहर निकालते हैं और पानी सेपरेट हो जाता है फिर। सो दैट इज द थिंग। नाउ थर्ड इम्प्योरिटी इन दिस वन इज सम ऑर्गेनिक सॉलिड्स। अब इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? लाइक शुगर, कार्बोक्सिलिक एसिड, यूरिया एक्सेट्रा। ये मैंने एग्जाम्पल लिए। शुगर आपको मालूम है, शुगर मालूम है ना, डिजोल्व होती है पानी के अंदर। Yes, sir. हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी डिजोल्व होता है, आपने शायद लैब में देखा होगा। उसके बाद यूरिया यानी क्या होता है? यूरिया पता है क्या आपको? हाँ सर, 11th एग्रीकल्चर में यूज में होता है। एग्रीकल्चर में, यानी ये जो आपके एग्रीकल्चर यानी फार्म्स में होता है ना, यूरिया, इट इज फर्टिलाइजर, यस यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड दैट कैन बी सोल्यूबल इन वाटर। तो ये सब एग्जांपल मैंने लिए हैं दैट कैन बी सोल्यूबल इन वाटर। So this organic dissolved impurities are removed from water involves oxidation और biochemical oxidation। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हो, फॉर एग्जांपल आपके इसमें ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है, यानी कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? आपके पास आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, यानी ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, है ना? आपके जो एलिमेंट है पानी के अंदर, उसको आप ट्रीट कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ। आपके पानी के अंदर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि यूरिया है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? C+O2 gives you CO2 CO2। एग्जैक्टली, वैसे वाटर के साथ क्या मिलेगा? H2O। एग्जैक्टली। तो आपकी जो एग्जैक्टली तो कार्बन होगा, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव यू CO2, एंड अगर हाइड्रोजन है, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव यू H2O। और इस तरह से जो डिजोल्व इम्प्यूरिटीज है, ऑर्गेनिक डिजोल्व इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। CO2 हमने देखा, CO2 कैसे रिमूव करोगे? बाय वार्मिंग ऑफ वाटर और मैकेनिकल डीएरेशन से। और वो H2O तो H2O है, तो उसको फिर से रिमूव करने की जरूरत है नहीं। तो आपका पानी यहाँ पे आप लोग देखते हो, सो इट विल बी क्लीन। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। डाउट क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. तो आगे Yes, की sir. लास्ट की एक इम्प्योरिटी वो भी देख लेते हैं। तो और एक इम्प्योरिटी हमने देखी थी, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। तो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज क्या होती है आप लोगों को मालूम होगा, है ना? आए हो क्या इसके साथ? बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी के साथ कभी दो दो हाथ किए क्या? पानी के अंदर बायोलॉजिकल नहीं किया कभी? क्या बात सर कर रहे हैं? हाँ, ये हाँ, नहीं किया है। सर। वगैरह आ जाते सर।
हाँ वगैरह के वही पानी के अंदर जो एग्जैक्टली पानी के अंदर जो भी अलगी होती है या फिर बैक्टीरिया होता है, जो भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब होती है, so that comes under this biological impurity. बैक्टीरिया वायरसेस हाँ, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस प्रोटोजोआ होते हैं, एग्जैक्टली तो ये सब चीजों के वजह से आप लोग देखते हो कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया यानी क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया के कल्चर के लिए क्या लगेगा? एटीपी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगता हाँ है। ऑक्सीजन वाले अनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन की नहीं जरूरत नहीं है। लगेगा। जरूरत नहीं, एग्जैक्टली दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और ये जो लास्ट के पैथोलॉजिकल टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसके वजह से आप लोग बीमार होते हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग को जो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये पैथोलॉजिकल बैक्टीरियाज होते हैं। तो जिसके वजह से अगर ये शरीर में गए पानी थ्रू, तो आप लोग देखते हो कि वेरियस आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी फीवर होता है या फिर लूज मोशन के प्रॉब्लम होते हैं, पेट खराब हो जाता है, कॉलरा होता है, वही ये सब चीजें होती है। So in this water, it contains this algae, fungus, and other small size aquatic animals, and they are present in surface water. They can be removed by filtration and sterilization. तो ये अगर पानी के अंदर है तो आप इसको एक तो फिल्टर करके लेते हैं, स्टरलाइज कैसे करेंगे हम इसको? पानी को, बैक्टीरिया अगर पानी के अंदर है तो उसको स्टरलाइज कैसे करते हैं? घर में एक सिंपल सी मेथड होती है, पानी गर्म कर दो सर। बॉइलिंग, एग्जैक्टली बॉइलिंग करते हैं। या फिर आजकल दुकान में नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आपने देखा है कि हाँ आपने घर में आपके होंगे ना वाटर प्यूरिफायर कुछ तो? हाँ सर है ना, तो फिर उसका फंक्शन हाँ। देखा है क्या? वो उसमें होता है क्या, स्टरलाइज होता है क्या पानी उसके अंदर? हाँ सर, यूवी स्टेरलाइज होता है। यूवी स्टरलाइज होता है। ओके, यूवी स्टरलाइज होता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? सर यूवी रेस से वो लोग अल्ट्रावायलेट स्टेरलाइजेशन रेस एक्सपोजर हो जाता है। या नहीं, यानी आपका जो पानी है जब उस कैंडल थ्रू बाहर आता है, यानी जो आपका सॉफ्टनर है उससे, जब कैंडल होते हैं उसके अंदर तो पॉलीमर के बने होते हैं, तो उससे जब पास होता है ड्यूरिंग दैट टाइम इट गेट एक्सपोज टू द यूवी लाइट। अब यूवी लाइट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो जम मार सकता है कि उसमें कैपेसिटी है क्या उतनी? हाँ सर। है कैसे? तो वो डीएनए ऑल्टर कर देता है उनका डीएनए ऑल्टर इंस्टेंटली। करता है, एग्जैक्टली आपको मालूम होगा कि ये जो आपके यूवी रेज या फिर एक्स रेज होते हैं उसमें एनर्जी होती है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू किल दैट बैक्टीरिया, टू रिमूव दैट बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर. So this can be removed. Any other method we can remove the bacteria? ओजोनाइजेशन। ओजोनाइजेशन कर सकते हैं, एग्जैक्टली ओजोन के साथ इसको ट्रीट करते हैं, या फिर सब ब्लीचिंग वाटर। एग्जैक्टली वो भी करते हैं। ब्लीच यानी वहां पे क्लोरीन का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोनाइजेशन। क्लोरिनेशन, एग्जैक्टली। तो दैट इज द थिंग, वी कैन मेक दिस वाटर क्लीन। ओके, सो आप जो ड्रिंकिंग वाटर होता है जिसके ऊपर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हमको ये चीज शुरू में हमको वही देखनी है कि पानी जो आपको नेचुरल सोर्सेस से आता है, इट कम थ्रू द रेन, surface water या ground water, and it get contaminated by various impurities, and that's why we cannot utilize that water as it is. To use that water, basically आप अगर पानी का देखते हो तो पानी के दो इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। कौन से होते हैं? एक होता है ड्रिंकिंग। हाँ, ड्रिंकिंग के लिए आप उसको डोमेस्टिक यूज बोलते हो, यानी घर में आपके जो भी लगता है ना पानी, तो उसको डोमेस्टिक यूज बोलते हैं। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट से आपके घर में जो पानी आता है दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। और दूसरा पानी होता है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वाटर। तो इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है दैट इज यूज फॉर द इंडस्ट्री। अब आप लोगों को मालूम होगा कि इंडस्ट्री में वो कूलिंग पर्पज के लिए वगैरह इस्तेमाल होता है, या फिर रिएक्शन में वगैरह इसका इस्तेमाल होता है, स्टीम जनरेशन में वगैरह। हाँ सर। तो ये कभी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके यूसेज, बट फिलहाल के लिए हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, वाटर एंड इट्स वेरियस डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। सो इसके अंदर हमने आज देखा कि हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर है
तो ये जो नेचुरल सोर्सेस है, रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, तो ये पूरे जो वाटर है इसमें बेसिकली चार तरह की इम्प्यूरिटीज होती है। एक होता है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, दूसरी होती है कोलाइडल इम्प्यूरिटीज, तीसरी होती है डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज और चौथी होती है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। अब सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज में हमने देखा कि पार्टिकल साइज बड़ा होता है, more than 1000 angstrom unit, so it can be removed simply by filtration. Second, colloidal particle का साइज छोटा होता है, they carry the charge, so we required here, क्या बोला था मैंने वर्ड, कौन सा वर्ड था वो? टर्बाइड। हाँ, टर्बिड बन जाता है। टर्बिडिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम उसमें, कौन सा केमिकल ऐड करते हैं? एलम ऐड करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन। एग्जैक्टली, कोएगुलेशन, देन फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हाँ, वेरी गुड। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। उसके बाद डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज। डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज में हमसे कौन से 3 टाइप्स देखे? पहला था मेटल सॉल्ट, हाँ, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, बाद में गैसेस, डिसॉल्व गैसेस होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉलिड, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज रहती है। ओके, सो डिसॉल्व सॉल्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, gases can be removed by warming or mechanical deaeration. Exactly. और last वाला organic impurities can be removed by treating with और by oxidation, ऑक्सीजन के साथ। और वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी दिया था। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ केमिकल वी यूज, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे? बायोलॉजिकल यानी बैक्टीरिया एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। आपने एंजाइम कल्चर वगैरह करते हैं ना, so they use that thing for the oxidation purposes। तो ये हो गया। और लास्ट में हमने देखा बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज आर ड्यू टू द वेरियस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमको सबसे प्रॉब्लमेटिक होते हैं पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया, that can be removed by filtration and sterilization। ये समझ में आ गया आज के पॉइंट्स कौन से थे? बेसिक हमने आज पानी के बारे में डिस्कस किया। आगे हम थोड़ा सा हार्डनेस के ऊपर, हाँ, तो सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो मैं एक आपको सवाल पूछूं? यस सर। यस सर। मुझे बताओ कि आपके जो देख रहे हो यहाँ पे 3 टाइप्स, रेन वाटर, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, इसमें जो आपके स्प्रिंग होता है, ओके, या फिर वेल होता है, यानी आपका अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसमें कौन से टाइप की इम्प्यूरिटीज रहेगी? क्या लगता है आपको? आपने अभी जो बायोलॉजिकल रहेगी क्या? बायोलॉजिकल आपके स्प्रिंग में बायोलॉजिकल रहेंगी क्या? सस्पेंडेड क्यों होंगी? सॉइल अंडरग्राउंड। हाँ, तो और आपने अगर ये पानी स्प्रिंग्स का देखा तो उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्ट हो सकते हैं क्या? हाँ सर, हो सकते हैं, क्योंकि हाँ क्या ना, हाँ सर, क्योंकि एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो जमीन है आपकी, अर्थ सरफेस है, इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ओर, एंड दोज आर मेड अप ऑफ वेरियस मेटल्स। तो ये जो मेटल सॉल्ट्स हमने देखे तो दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो पानी जैसे वहां पे जाता है, it comes in contact with that one and it get contaminated by such salts, and due to that one percentage of such thing is more as compared to the surface water। अगर आप surface water देखते हो, it get exposed to the atmosphere। अगर वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है तो इसका मतलब है उसमें गैसेस ज्यादा होती है, डिजॉल्व गैसेस। डिजॉल्व सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन डिजॉल्व गैसेस जो होती है, अंडरग्राउंड वाटर तो गैस के साथ इतना कांटेक्ट में आएगा नहीं, तो उसके वजह से उसमें डिजॉल्व गैसेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसके हार्डनेस के ऊपर भी जंप करेंगे। ओके, यस सर। आज के लिए आज और कुछ क्वेश्चन, कुछ है क्या सवाल? नो सर। नहीं है, ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं और फिर हम we can see discuss the same point in the next lecture, some additional points in this topic we can discuss। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके सर। ओके, see you tomorrow। ओके बाय। ओके सर। बाय सर। थैंक यू। ओके, एक मिनट है, एक बाय सर। मिनट है आपके लिए। कल आपका जो लेक्चर सेशन है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है?
ठीक है सर। और आपके ग्रुप पे आ जाएगा, आपके ग्रुप पे लिंक आ जाएगी वहां पे। ठीक है ओके सर, बाय बाय। ओके सर। काय करू देव करू